juste 2 minutes, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce qu'on est déjà en retard. Présentation de l'invité. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'honore encore plus dans ce monde de la akhirah pour sa visite. C'est vraiment une grande nouvelle pour nous. Wallah, c'est vraiment une grande nouvelle pour nous. On va dire, je ne vais pas perdre beaucoup de temps, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Si vous êtes là, vous connaissez qui est là avec nous aujourd'hui. Je ne vais pas citer d'autres noms, mais on va dire parmi les ulama de ce monde d'aujourd'hui, eh bien on en a, je ne vais pas dire top 3, top 5, on n'est pas là pour classifier les ulama. Mais Allah, dans le monde arabophone et dans le monde ourdophone, c'est vraiment une référence. Cheikh, c'est le fils de Mufti, je ne vais pas dire trop non plus de nom parce qu'il n'aime pas trop qu'on parle de lui. En tout état de cause, Cheikh, c'est le fils de Cheikh Shafi, Mufti Shafi, rahimahullah ta'ala, le Mufti de Pakistan. Aujourd'hui, Cheikh Taqi, il enseigne le Sahih al-Bukhari au Dar al-Ulum de Karachi, au Pakistan. Cheikh est aussi vice-président de Majma' al-Fiqh de Jeddah. Majma' al-Fiqh de Jeddah, en fait, c'est la référence du fiqh dans le monde. Cheikh, il a écrit un commentaire de Sahih Muslim, Takmal Fath al-Mulhim, qui est vraiment une référence aujourd'hui dans les livres de fiqh et dans les livres de hadith de par le monde. C'est en arabe et beaucoup d'entre vous le connaissent à travers ce livre aussi. Cheikh, il a écrit une 60aine d'ouvrages qui sont tous des références dans beaucoup de domaines différents. Dans Ulum al-Qur'an, il a écrit un livre qui est référence. Il a écrit des livres de commentaires de hadith et d'enseignants de hadith. Dans le fiqh aussi, c'est aussi une référence. Dernière chose, beaucoup d'entre nous le connaissent peut-être pas dans le monde purement fiqhi, mais dans le monde de la finance islamique. Cheikh, il a cette vision-là en disant que si on ne peut pas vivre dans un monde de haram, lorsqu'on est plongé dans le haram, qu'est-ce qu'on devrait faire pour que dans 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, eh bien, pour s'en sortir. On ne peut pas se dire, mais c'est comme ça, donc c'est bon, c'est khalas. Il dit que comment on s'en sort. Et donc, à un moment donné, il a eu cette réflexion il y a quelques dizaines d'années. Donc, il a mis en place, il a formalisé ce qu'on appelle aujourd'hui la finance islamique contemporaine. Et donc, les fatawa, etc., il siège, il préside le conseil des ulama de l'AOFI, le siège de la finance islamique dans le monde. Et donc, dans cet aspect économique aussi, c'est quelqu'un qui fait référence de par le monde. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. On le remercie aussi parce qu'il est là en voyage privé. Il était venu effectivement parce qu'on lui avait dit, on lui avait parlé du projet Nadwi. Il dit qu'il nous avait promis de venir pour réfléchir sur la vision, sur le Dar al-Ulum, sur qu'est-ce qu'on va faire avec Nadwi, Inch'Allah. Malgré tout, il a tenu à échanger avec le Talib al-Ilm, avec les étudiants, mais aussi avec tout le monde. Et donc, il est là aujourd'hui devant nous. Il y aura une intervention aujourd'hui publique. Après, ces réunions privées, et Inch'Allah il y en aura un autre mardi soir à la Courneuve, c'est ça? Mardi soir à la Courneuve, Inch'Allah on va vous donner l'heure. Quelle heure? 7h, 7h30, 19h, 19h30 Inch'Allah à la Courneuve. On vous donnera l'adresse après Inch'Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کا موقع ہے کہ آپ حضرات سے اس وقت ملاقات کرنے اور بات کرنے کی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. لیکن ساتھ ہی مجھے آپ حضرات سے یہ معذرت کرنی ہے کہ میں فرانسیسی زبان سے ناواقف ہونے کی بنا پر آپ حضرات سے فرینچ میں گفتگو کرنے سے معذور ہوں، اور اسی لیے میری بات کا ساتھ ساتھ انشاءاللہ ترجمہ فرینچ زبان میں ہوتا رہے گا. لیکن ایک بات میں جانتا ہوں کہ محبت اور دلی تعلق کی کوئی زبان نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دلوں میں محبت پیدا فرمائے تو ایک دوسرے کی زبان جانے بغیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان ایک رابطہ اور ایک کشش پیدا فرما دیتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, Mufti Saab commence son intervention en exprimant sa grande joie par rapport à cette opportunité qui lui est donnée de venir à votre rencontre, d'être présent avec vous ce soir et de pouvoir échanger avec vous. Mais en même temps, il présente ses excuses par rapport au fait qu'il ne maîtrise pas la langue française et donc il ne pourra pas parler directement. Vous parlez directement en français, mais Inch'Allah, la traduction est assurée. Néanmoins, il précise un point très important. Il dit que le lien qui s'établit au niveau du cœur et l'attachement qui s'établit entre des personnes de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cet attachement n'a pas à être formalisé à travers une langue particulière. Il dit que même si nous ne parlons pas la même langue, il n'en reste pas moins qu'à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala établit un lien entre nos cœurs, eh bien ce lien sera établi. Il n'a pas besoin, il n'est pas dépendant d'une quelconque formulation à travers une langue particulière. مجھے اپنی زندگی میں وہ منظر کبھی بھولتا نہیں ہے جب مجھے چین جانے کا اتفاق ہوا اور پاکستان کے علماء کا ایک وفد چین بھیجا گیا تھا جو میری قیادت میں گیا تھا، اور یہ وہ پہلا وقت تھا جو چین کے دروازے باہر کے لوگوں کے لیے کھلنے کے بعد مسلمانوں کا پہلا وقت چین کی طرف روانہ ہوا. تو مجھے یاد ہے کہ جہاں سے بھی، جس بستی سے بھی ہمارا قافلہ گزرتا تھا تو وہاں کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر سخت سردی کے ساتھ کے عالم میں راستوں کے دونوں طرف کھڑے ہوتے تھے. اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک کار کے ذریعے بہت طویل سفر طے کرنا تھا، اور اس طویل سفر کے دوران پہاڑی علاقے آتے تھے اور درجہ حرارت 0 سے 16 ڈگری نیچے گرا ہوا تھا اور برفانی ماحول تھا. اس ماحول کے اندر معلوم ہوا کہ جس بستی سے ہم گزر رہے ہیں تو وہاں سینکڑوں مسلمان پہاڑ کے دامن میں برف باری کے دوران کئی گھنٹے سے ہمارے قافلے کا انتظار کر رہے ہیں. اور جب ہمارا قافلہ ان کے پاس پہنچا تو وہ ایک ہی زبون کے منہ پر ایک ہی لفظ تھا، اس لیے کہ کوئی اور لفظ نہ وہ ہمارا سمجھ سکتے تھے نہ ہم ان کا سمجھ سکتے تھے. لیکن ہم نے جب اتر کر ان کے سامنے ہم کھڑے ہوئے تو ایک ہی لفظ تھا اور وہ تھا السلام علیکم.
और मैंने देखा कि उनके आंखों से आंसू जारी है। तो वो मंजर मुझे भूलता नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मुसलमानों के दरमियान ईमान का रिश्ता और कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिश्ता ऐसा रखा है कि आदमी मशरिक में रहता हो या मगरिब में, कोई भी ज़बान बोलता हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दरमियान आपस में मोहब्बत और मवद्दत और एक दूसरे के साथ कल्बी ताल्लुक़ का एक ऐसा अनमिट रिश्ता कायम फरमा दिया है जिसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। Mufti Sahib nous raconte une scène. Il dit qu'il n'oubliera jamais. C'est la scène qu'il a vécue lui-même à la tête, il était à la tête d'une délégation de savants du Pakistan qui s'était rendue en Chine. C'était l'une des premières délégations qui se rendait en Chine après que l'autorisation soit donnée, donc que des délégations musulmanes viennent visiter le pays et viennent à la visite des musulmans du pays. Il raconte, il dit que lorsqu'ils se sont rendus en Chine, et donc forcément ils ne parlaient pas non plus le chinois, eh bien ce qu'ils ont constaté, c'est qu'à chaque endroit où ils se rendaient, dans chaque ville qu'ils visitaient, eh bien il y avait une ferveur particulière de la part des gens qui les attendaient. Les gens restaient debout dans la rue, dans le froid, à les attendre, à attendre cette délégation qui venait, qui n'était pourtant pas des Chinois, qui étaient des gens qui venaient dans notre pays. Et il nous dit qu'une fois, il leur est arrivé d'aller visiter une ville après un très long trajet dans les montagnes, où il faisait très froid. Il y avait de la neige, et en arrivant sur place, ils se sont rendus compte qu'il y avait des dizaines, des centaines de gens qui étaient là, depuis des heures à les attendre dans la neige, dans le froid, et qui attendaient leur venue. Et lorsqu'ils sont arrivés sur place, qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh bien, ces gens qui ne pouvaient rien dire dans leur langue à eux, et eux ne pouvaient rien dire dans la langue chinoise. Ces gens ne connaissaient qu'une phrase. Lorsqu'ils sont arrivés, eh bien, ces gens sont venus à leur rencontre en leur disant « Assalamu alaikum wa rahmatullah » avec les larmes qui coulaient. Ça, c'était l'amour et l'attachement que ces gens de Chine avaient pour ces frères qui venaient du Pakistan. Et donc, Mufti Sahib dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ainsi, dans le cœur des croyants, entre tous les croyants du monde, ceux qui habitent en Occident et ceux qui habitent en Orient, il a créé un lien indéfectible. Et quelles que soient les personnes ou les forces qui essaieront de rompre ce lien, eh bien on ne pourra rompre ce lien, c'est le lien de la foi et de l'affection en Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह जल्ल जलालुहु का फज़ल व करम है कि उसने हमें इस कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तहत जमा फरमाया। लेकिन इस कलेमे की और इसके नताइज व समरात की हमें हिफाजत करने और उसके कदर करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। तो ये इतनी बड़ी नेमत है कि उसके ज़रिए हम अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं। लेकिन इस ईमान के एक माना तो ये है कि हम ज़बान से इस बात का इकरार कर लें कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जल्ल जलालुहु के रसूल। एक तो यह है कि हम ज़बान से इसका इकरार करें, लेकिन इसकी हकीकत, इसकी लज्जत, इसकी नेमत होने का एहसास, इसकी हलावत उस वक्त तक नहीं हासिल हो सकती जब तक कि इसके तकाज़ों पर और इसके मुतालबात के ऊपर इंसान अमल न करे। Donc Mufti Sahib il nous dit que, alhamdulillah, c'est vraiment une très grande faveur, un très grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a réunis ici donc sous l'étendard de la profession de foi, sur la base de ce lien qui nous unit, qui est celui de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais autant cette formulation, cette attestation de foi, elle est importante, elle a également des effets, elle doit produire également des effets, elle produit des fruits. Et c'est la raison pour laquelle il insiste que cette kalima, cette profession de foi, elle est fondamentale pour chacun de nous, parce qu'elle renferme la clé du salut dans ce monde et dans l'autre monde, pour chacun et chacune d'entre nous. Mais autant ce bienfait, il est fondamental, il est essentiel, autant pour qu'il puisse produire ces effets, qui sont dissimulés dans cette attestation de foi, eh bien il y a un certain nombre d'exigences que l'on se doit de respecter à notre égard, de notre façon. Et il dit qu'en fait, par rapport à cette kalima, eh bien il y a deux choses à bien comprendre. Le premier aspect par rapport à la profession de foi, c'est la formulation orale. C'est d'attester verbalement
qu'il n'y a personne digne d'adoration si ce n'est Allah et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. L'attester formellement, oralement, c'est un élément fondamental requis, mais ce n'est qu'un aspect de cette attestation de foi. Mais le plus important, ce qui nous permettra d'obtenir la saveur de cette profession de foi, ce qui nous apportera les fruits de cette profession de foi, ce qui nous permettra de mesurer l'importance qu'il constitue comme bienfait de la part d'Allah, eh bien ce niveau se situe à un autre niveau. Tant que l'on ne remplira pas les exigences de cette profession de foi, on ne pourra pas bénéficier réellement de cette attestation, de cette shahada. اس کلمے کے دو حصے ہیں. ایک حصے میں اس بات کا اقرار اور اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کے معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. عبادت ہم کریں گے تو اللہ کی کریں گے, بات اگر مانیں گے تو اللہ کی مانیں گے, اطاعت اگر کریں گے تو اللہ کی کریں گے. محبت کا حقیقی حقدار اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لہذا اپنی زندگی میں جہاں کہیں ہماری خواہشات اور ہمارے جذبات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا تو اس صورت میں ہماری ترجیح یہ ہوگی کہ ہم اپنی خواہشات کو پامال کر دیں, اپنے جذبات کو قربان کر دیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پامال نہ ہونے دیں. اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے معنی یہ ہے کہ ہم نے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا تو جو پیغام بھی وہ لے کر آئیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکام وہ لائیں گے, جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائیں گے, جو ہدایات ہمیں دیں گے, وہ ہدایات ہمارے زندگی کے اندر سب سے زیادہ اہمیت ان ہدایات کو حاصل ہوگی. اور اگر کبھی ہماری خواہشات میں, ہمارے جذبات میں, ہمارے تعلقات میں اگر ان کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہوگا تو ہمارا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہوگا, اپنی خواہشات اور جذبات اور خیالات سے نہیں ہوگا. Donc, Mufti Sahab nous dit qu'il nous rappelle que la profession de foi, l'attestation, le témoignage consiste en deux parties distinctes. La première partie consiste au témoignage qu'il n'y a personne ni rien qui est digne d'adoration si ce n'est Allah. Affirmer cela signifie profondément que l'on accepte de vouer notre culte et notre adoration exclusivement à Allah. Cela signifie que l'on n'adorera rien ni personne d'autre qu'Allah, que l'on ne considérera l'obéissance de quiconque ni de quoi que ce soit équivalente à l'obéissance d'Allah. Cela signifie aussi que l'on ne fera jamais passer l'amour et l'attachement de qui que ce soit ou de quoi que ce soit avant l'attachement avec Allah. Et donc à partir du moment où de notre vie quotidienne, il y a une confrontation, une opposition entre nos pulsions, nos désirs et nos envies personnelles et ce qu'Allah il exige de nous, eh bien nous accepterons et nous comprendrons que ce que l'on doit sacrifier, ce sont nos désirs et nos envies, et ce que l'on doit mettre en œuvre, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le sens profond de la ilaha illallah. Il y a ensuite la deuxième partie, l'attestation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Là aussi, quand on affirme cela, eh bien c'est comme si, c'est une affirmation, c'est une expression que l'on accepte que l'enseignement que le prophète alayhi salatu wa sallam il est venu nous apporter, les ordres qu'il est venu nous transmettre, la guidée qu'il est venu nous donner pour nous éclairer, primeront sur toute autre chose dans notre vie quotidienne. Et là encore, si à un moment ou à un autre, il y a une confrontation, il y a une opposition entre ce que nous désirons et l'enseignement prophétique et l'enseignement révélé, eh bien nous sacrifierons nos désirs au profit de l'enseignement révélé. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا. یعنی ہر انسان کی زندگی, ہر انسان کا جسم, اس کی صورت, اس کی شباہت, اس کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے توازن کے ساتھ پیدا فرمائی, ایک ایسے توازن کے ساتھ کہ وہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق قرار پایا. کوئی مخلوق, کوئی حیوان, کوئی جانور اپنی خلقی خصوصیات کے اعتبار سے انسان جیسا نہیں ہو سکتا.
अल्लाह तबारक व तआला ने उसके आज़ा भी ठीक ठीक बनाए, उसको समझने की सलाहियत भी दी, उसको अक्ल भी अता फरमाई। आप देखते हैं कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी अक्ल अता फरमाई है कि सारे दुनिया के जानवर और जितनी दुनिया की कायनात की अशिया हैं वो सारी की सारी इंसान के आगे सख्त मुसख्खर फरमा दी हैं। एक इंसान अगर फ़र्ज़ करो कि घोड़े का मुकाबला अगर इंसान से किया जाए तो ताकत के एतबार से इंसान घोड़े से बहुत कमज़ोर, और घोड़ा इतना ताकतवर है कि उसी घोड़े के हिसाब से आप सारी दुनिया की चीज़ों के ताकत का पैमाना मुकर्रर करते हैं कि इसमें इतने हॉर्स पावर की ताकत है, इसमें इतने हॉर्स पावर की ताकत है, इतनी ताकत उसने रखी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बावजूद कमज़ोर होने के उसको ऐसा बना दिया कि वो उसका एक बच्चा भी उसके घोड़े के मुंह में लगाम डालकर उसको जहाँ चाहे ले जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इस तरह बनाया कि उसकी खिलकत भी, उसकी सूरत भी तमाम मखलूक़ात से बेहतर है, और उसके अंदर अक्ल और समझ भी अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी रखी है कि उसकी वजह से सारी कायनात की मखलूक़ात उसके ताबे फरमान होकर रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये सारा कुछ करने के बाद हमने हर इंसान को ये भी बता दिया कि फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि उसके दिल में ये बात भी डाल दी कि कौन सा काम गुनाह का है, और उसकी ख्वाहिश भी पैदा कर दी, गुनाह की ख्वाहिश भी, और तक़वाहा, और उसके अंदर नेकी की ख्वाहिश भी नेकी का जज्बा भी पैदा कर दिया। अब इंसान का इम्तिहान यह है कि वो गुनाहों की ख्वाहिश पर काबू पाकर अल्लाह तबारक व तआला के तक़वा को इख्तियार करके अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होने के एहसास को मद्देनज़र रखकर अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाए और गुनाहों से बचकर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous parle de la finalité et de la profondeur de notre création. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa nafsin wa ma sawwaha. Il prend un serment au nom de l'être, de l'individu qu'Allah il a créé de façon parfaite, de façon équilibrée, de façon harmonieuse. Et donc Mufti Sab il nous rappelle, il nous dit que regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé à l'être humain, à l'espèce humaine, la forme la plus parfaite parmi toutes les créatures, parmi le monde, dans le monde animal et tous les autres créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé à l'être humain la forme la plus parfaite. Une forme donc qui présente cet équilibre, qui présente cette harmonie, qui présente cette beauté au niveau physique que l'on ne retrouve pas ailleurs dans le monde animal. Mais également Allah subhanahu wa ta'ala, de la perfection qu'il a accordée à l'être humain, il lui a accordé cet élément dont il a privé les animaux. C'est la raison humaine. Cette faculté de percevoir et de comprendre et d'analyser le monde qui l'entoure, dont le monde animal est privé. Et c'est ce qui fait que l'être humain, il peut avoir le dessus sur les animaux. Et là, il donne un exemple, il dit que regardez, vous prenez un animal comme le cheval, qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide que l'être humain. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le cheval constitue une norme. Quand vous avez des voitures, vous voulez connaître la puissance de la voiture, elle s'exprime en nombre de chevaux. Donc ça montre bien la puissance de l'animal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, avec la raison qu'il a accordée à l'être humain, il accorde à l'être humain le pouvoir de dominer cet animal, de le contrôler à tel point que même un enfant, il peut prendre un cheval et le tirer avec lui. Même si physiquement, il est beaucoup plus faible, il n'a aucune force par rapport à cet animal, mais Allah subhanahu wa ta'ala, avec cette perfection relative qu'il a donnée à l'être humain, eh bien, il accorde le contrôle à l'homme par rapport à ces animaux. Allah, donc, il fait un serment au nom de cette perfection. Wa nafsin wa ma sawwaha. Qu'Allah, il est celui qui a créé l'âme et il l'a façonné. Il l'a façonné, il lui a donné la forme qui lui appartient. Et ensuite, Allah, il dit فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Qu'après avoir créé l'homme avec toute cette perfection relative, il lui a inspiré, il lui a montré le bien et le mal. Il lui a montré qu'est-ce qui constitue un moyen de se rapprocher de lui et une bonne action, et également qu'est-ce qui constitue un péché et qui éloigne de lui. Mais en même temps, il a créé, il a placé dans l'être humain le désir, aussi bien pour aller vers le bien, mais également le désir pour aller vers le mal. Et finalement, on retrouve l'essence même de l'épreuve de la vie humaine. Que Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir créé ces facultés chez l'être humain, ce qu'il exige de nous, c'est que l'on arrive à maîtriser cette envie et ce désir d'aller vers le mal, et que l'on fasse dominer l'envie du bien et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'on chemine constamment vers lui. उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब हमने इंसान को अक्ल भी दी, समझ भी दी, और ये भी उसके दिल में ख्वाहिश गुनाह की भी पैदा की और नेकी करने की भी पैदा की,
اس کے بعد قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شخص اپنے اس نفس کو، اپنی اس جان کو پاک صاف رکھے گا، گناہوں سے پاک صاف رکھے گا، وہ فلاح پائے گا، یعنی کامیابی اس کو حاصل ہوگی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور وقد خواب من دساہا، اور جو شخص اس نفس کو یہ برباد کر دے گا تو وہ دنیا میں بھی تباہ ہوگا اور آخرت میں بھی تباہ ہوگا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد دو چیزوں کے درمیان بہت واضح فرق بیان فرما دیا ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے انسان، اپنے نفس کو پاک صاف بنائے، اور اگر نفس کو پاک صاف بنائے گا تو اس کو فلاح حاصل ہوگی، اور اگر نفس کو پاک صاف نہیں بنائے گا بلکہ اس کو آزاد چھوڑ دے گا تو اس صورت میں اس کو ناکامی اور نامرادی سے سامنا پیش آئے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نفس کو پاک کرنے اور تزکیہ کا کیا مطلب ہے، اور جس کو قرآن کریم نے جس کے اوپر فلاح کو موقوف کیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا ایک لازمی تقاضا اور لازمی عنصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہماری دنیا و آخرت سنور جائے۔ تو تزکیہ کیا چیز ہے اور کس طرح وہ پاکی حاصل ہوتی ہے اور کیا اس کا طریقہ ہے، اس کو میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کے مطابق اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle les éléments qu'il a créés en nous, les facultés qu'il a créées en nous. Et donc, il nous montre que Allah qu'il a créé chez nous aussi bien la raison humaine, mais également cette aptitude d'aller vers le bien, de pencher vers le bien, mais également d'aller vers le mal. Et ensuite, Allah, il nous pose la règle, très claire. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Qad aflaha man zakkaha » réussira celui qui purifiera son âme. Celui qui arrivera à purifier son âme, lui aura réussi dans ce monde, mais également dans l'autre monde. Il s'assurera le succès de l'autre monde. Et purifier. Et la deuxième chose qu'Allah nous dit, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Quant à celui qui se laissera dominer, qui suivra les pulsions, ces pulsions perverses qui se trouvent dans son âme, eh bien lui, il aura perdu aussi bien dans ce monde que dans l'autre monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il pose ainsi une limite très claire. Il clarifie la différence fondamentale qu'il y a entre la condition de celui qui fera l'effort de purifier son âme et celui qui ne fera pas cet effort et qui se laissera aller. Celui qui suivra ses pulsions, qui laissera libre cours à ses désirs, lui sera perdu. Celui qui acceptera de purifier son âme, lui sera sauvé. Et là, donc, Mufti Sahib nous dit que ce que l'on apprend de là, c'est que purifier son âme, c'est une exigence inhérente à la foi, au iman. On ne peut distinguer le devoir de purification de soi de la foi. Ça fait partie intégrante et c'est justement sur cette purification de l'âme. En quoi cela consiste exactement que, Inch'Allah, il va essayer de rappeler quelques éléments très importants sur ce devoir de purification de l'âme. تزکیہ کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فجور یعنی گناہ کے جذبات پیدا فرمائے ہیں ان کے اوپر آدمی قابو پا لے اور قابو پا کر ان کو دبا دے اور اس کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اپنے اوپر غالب کر دے۔ یہ خلاصہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ کا لفظی معنی ہے پاک کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک صاف کرنے کے لیے 3 شریعت میں مختلف درجات ہیں۔ ایک کو نظافت کہتے ہیں۔ نظافت کے معنی ظاہری اعتبار سے وہ چیز صاف ستھری نظر آ رہی ہے، نظیف ہے یعنی صاف ستھری ہے۔ اگر فرض کرو کپڑا میلا ہے تو اس کو پانی سے دھو کر صاف کر دیا، یہ نظیف ہو گیا۔ اور ایک ہے طہارت۔ طہارت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے کسی چیز کو ظاہری طور پر پاک کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے اس کو پاک کیا جائے۔ جیسے کہ اگر فرض کرو کہ آدمی ابھی غسل خانے سے نکل کر آیا اور اچھی طریقے سے اس نے پورا باتھ لیا اور اچھی طریقے سے غسل کرنے کے بعد اس کے جسم کا میل کچیل بھی دور ہو گیا، اس نے بڑا اعلیٰ درجے کا صابن اور شیمپو بھی استعمال کر لیا، اور جب باہر نکلا تو دیکھنے میں وہ بالکل صاف ستھرا نظر آ رہا ہے، نظافت تو ہے، لیکن اگر اس کے بعد نکلنے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جائے کسی طرح
तो बज़ाहिर नज़ाफ़त तो पूरी मौजूद है, लेकिन तहारत नहीं रही। अब उस तहारत के लिए ज़रूरी है कि वो वज़ू करे, तो वज़ू के ज़रिए उसको तहारत हासिल होगी। ये तहारत का माना यह है कि जो उस सिर्फ ज़ाहिरी सफाई नहीं, ज़ाहिरी सुथराई नहीं, बल्कि उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए जो सफाई सुथराई ज़रूरी है वो सफाई सुथराई हासिल करे, ये तहारत है। और तीसरा दर्जा उसका तज़किया है। तज़किया के माना ये कि इंसान के दिल के अंदर जो खराबियाँ, जो मैल कुचैल, जो गुनाहों के ख्यालात जो पैदा होते हैं, मिसाल के तौर पर गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा आ जाए, या शहवत ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, या हसद किसी से पैदा हो जाए, या तकब्बुर आ जाए, या किसी अपनी बड़ाई का एहसास ज़्यादा पैदा हो जाए, या फर्ज करो कि दिखावा, नामो नमूद, रियाकारी पैदा हो जाए, तो ये सारी की सारी गंदगियां हैं जो इंसान के बातिन के अंदर, इंसान के कल्ब के अंदर पैदा होती हैं। इंसान का काम यह है कि वो इन गंदगियों से अपने दिल को भी पाक करे। उस गंदगियों से पाक करने का नाम तज़किया है। तो एक दर्जा नज़ाफ़त, दूसरा दर्जा तहारत, तीसरा दर्जा तज़किया, और तीनों शरीयत में मतलूब हैं। नज़ाफ़त भी चाहिए, एक मुसलमान का काम यह है कि वो नज़ीफ़ हो, गंदगी ना हो, गंदगी देखने वाला भी उसको गंदा ना समझे, इसकी भी तलक़ीन फरमाई गई है। हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी तालीम दी है कि नज़ाफ़त का एहतमाम हो, और तहारत की भी तलक़ीन है, और तज़किया की भी तलक़ीन है। Donc Mufti Sahib nous dit que si on voulait résumer très simplement, synthétiser en quoi consiste exactement la tazkiya, eh bien on pourrait dire que la tazkiya consiste à purifier son cœur, à purifier son âme de tout ce qui pourrait le souiller et le conduire vers la désobéissance d'Allah. Et faire en sorte que ce qui domine dans notre cœur, ce soit l'obéissance d'Allah. Parce que dans notre cœur, il y a effectivement des pulsions, des défauts. Eh bien, essayer d'écraser ces éléments nocifs et de faire dominer l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Mufti Sahib nous dit qu'en fait, il faut bien comprendre qu'en islam, de façon générale, il y a 3 niveaux de purification et de pureté qui est requis. Le premier niveau de pureté qui est requis, c'est ce que l'on appelle en arabe, le terme que l'on emploie, c'est nazafa. Nazafa que l'on traduirait par la propreté apparente. La propreté apparente, c'est quoi? C'est tout simplement de faire attention à son apparence extérieure physique, donc de rester toujours propre, que ce soit au niveau des vêtements, que ce soit au niveau de son corps. Ça, c'est un premier niveau de propreté. Au-delà de ce niveau de propreté, il y a une deuxième exigence. C'est ce que l'on appelle en arabe at-tahara. C'est la pureté qui a une dimension rituelle. Et là, pour nous faire comprendre, il nous explique que ça, c'est plutôt un état intérieur. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a pris une douche, qui a donc pris une bonne douche, qui a fait donc un bon shampoing, etc., et qui ressort de la salle de bain qui est très propre. Lui, il est dans un état de nazafa, il est très propre. Mais si juste en sortant de la salle de bain, il perd ses ablutions, dans ce cas, on dira de lui que c'est quelqu'un de propre, mais qu'il n'est pas en état de tahara. Il n'est plus dans cet état de pureté qui est requis pour faire l'adoration d'Allah. Et donc, dans ce cas, pour lui, même si en apparence il est propre, il aura besoin de renouveler ses ablutions pour se trouver dans l'état de tahara. Ça, c'est donc un deuxième niveau de purification. Et enfin, il y a le troisième niveau, c'est la purification du cœur et la purification de l'âme, contre effectivement tous les défauts, toutes ces pulsions qui peuvent l'assaillir, que ce soit l'excès de colère, que ce soit l'excès de désir, que ce soit l'orgueil, que ce soit l'ostentation, toutes ces maladies spirituelles que nous connaissons, purifier notre cœur de toutes ces maladies, c'est cela que l'on appelle la tazkiya. Et Mufti Sahib nous rappelle, il nous dit qu'en islam, les 3 niveaux de purification sont exigés. Quand on revient vers les enseignements révélés, on se rend compte qu'on trouve des exhortations aussi bien à faire attention à sa propreté apparente. Ça fait partie de l'islam que de faire attention à sa propreté apparente. Mais également, on trouve les exhortations sur la purification rituelle. Et enfin, et bien évidemment, on trouve les exhortations très appuyées sur la nécessaire purification du cœur et de l'âme. इस तज़किये के लिए ज़रूरी है कि इंसान गफलत की ज़िंदगी से अपने आप को बचाए। सबसे बुरी बला कुफ्र के बाद सबसे बड़ी बुरी बला इंसान के लिए मुसीबत यह है कि वो अपनी गफलत की ज़िंदगी गुजार रहा हो, यानी जो उसके जी में आ रहा है किए जा रहा है,
جو اس کی خواہشات پیدا ہو رہی ہیں ان کی پیروی کیے جا رہا ہے. اس کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے, مجھے ایک دن دنیا سے جانا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے, اپنے اعمال و اقوال کا جواب دہ ہونا ہے. اس کا خیال ہی نہیں آتا. جو مرضی میں آ رہا ہے وہ کیے جا رہا ہے, غفلت کی زندگی گزار رہا ہے. یہ غفلت کی زندگی انسان کو تزکیے سے اور حقیقی پاکی اور صفائی سے محروم کر دیتی ہے. اور دوسری زندگی جو مطلوب ہے تزکیے کے ذریعے وہ ہے جس کو قرآن کریم میں تقویٰ سے تعبیر فرمایا. تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایک کھٹک پیدا ہو جائے, ایک اس بات کا کہ فکر پیدا ہو جائے, جو کام وہ کر رہا ہو, جو بات زبان سے نکال رہا ہو, اس سے پہلے اس کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہو کہ کاش کہ پتہ نہیں میں یہ کام صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کو یہ راضی کرے گا یا ناراض کرے گا. ہر وقت اس کے دل و دماغ پر یہ بات مسلط ہو کہ میں کوئی قدم جو اٹھا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا ہے. اس کھٹک کا نام تقویٰ ہے, اور اس تقویٰ کے ذریعے تزکیہ حاصل ہوتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ یہ تقویٰ وہ چیز ہے جو انسان کے قلب کے اوپر ایک پہرا بٹھاتی ہے. جیسے پولیس کا پہرا ہوتا ہے یا فوج کا پہرا ہوتا ہے, وہ تو ظاہر میں ہوتا ہے, لیکن پولیس اور فوج اگر آدمی تنہائی میں ہو, خلوت میں ہو, جنگل میں ہو, کوئی دیکھنے والا نہ ہو, اور وہاں نہ پولیس ہے نہ فوج ہے نہ کوئی قانون بظاہر نظر آتا ہے, اس وقت میں اگر کوئی چیز انسان کے قلب پر پہرا بٹھانے والی ہے تو وہ صرف ایک ہے, اور وہ یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کے پیش ہونے کا احساس ہو کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اس احساس کا نام تقویٰ ہے. اس احساس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور اس کے مظاہر یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ راشد ہیں, جن کی برابر کسی نے دنیا پر ایسی حکومت نہیں کی, وہ ایک صبح وہ عام طور سے اپنے مدینہ منورہ کے گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے لوگوں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے. تو ایک جگہ سے گزرے, فجر سے پہلے کا وقت ہے, ایک گھر کے پاس سے گزرے تو وہاں ان کو دو عورتوں کی آپس میں آواز سنائی دی, ایک ماں ایک بیٹی. ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ کے اندر دودھ جو تم نے نکالا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ملا دو تاکہ وہ زیادہ ہو جائے اور اس کے ذریعے ہم اپنی روزی کما سکیں. بیٹی نے کہا کہ امی جان, امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم یہ آیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے. تو بوڑھی ماں کے منہ سے یہ نکلا کہ امیر المومنین کہاں دیکھ رہا ہے تمہیں یہاں کہ وہ دیکھ کر تمہیں کوئی سزا دے. امیر المومنین تو دیکھ نہیں رہا, لہذا پانی ملا دو اور پھر اس کو بھیج دینا. تو بیٹی نے جواب میں یہ کہا کہ امی جان, امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے, لہذا میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گھر سے باہر یہ بات سن رہے تھے, اور انہوں نے جب یہ بات سنی تو واپس جانے کے بعد دن میں معلوم کرایا کہ یہ کون سا گھرانہ ہے. معلوم ہوا کہ فلاں گھرانہ ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس بیٹی کے ساتھ کرنے کے لیے پیغام بھیجا. دونوں کے درمیان نکاح ہوا, اور انہی دونوں کی اولاد سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. Donc, après avoir évoqué l'importance de la tazkiya, Mufti Saad maintenant il nous rappelle qu'est-ce qui peut nous conduire et qu'est-ce qui peut nous freiner de la tazkiya. Le premier élément, le plus grave, c'est ce qui nous empêcherait d'arriver à la tazkiya, d'arriver à cette purification de l'âme. Et il nous dit que l'une des plus grandes, la plus grande calamité pour l'être humain, après le kufr, après l'incroyance, la plus grande calamité, c'est l'insouciance et l'inconscience. Et cette insouciance, cette inconscience, c'est justement l'obstacle qui nous empêche
d'arriver à cette taskiya, d'arriver à cette purification du cœur. L'insouciance, l'inconscience, c'est quoi? C'est que l'on agisse dans notre vie quotidienne en pensant qu'on est totalement libre de faire quoi que ce soit. Que l'on peut se permettre de dire, de faire ce qu'on a envie, de penser à ce qu'on a envie, et on oublie que viendra un jour, on aura à se mettre, à quitter ce monde avant tout, et surtout à se mettre debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, et à répondre de chacun de nos actes, et à répondre de chacune de nos pensées et chacune de nos paroles. Et il nous dit que cette inconscience aujourd'hui, qui est malheureusement très répandue, cette insouciance qui est omniprésente, est devenue aujourd'hui le premier obstacle à la mise en œuvre de la taskiya et de la purification du cœur, et ça nous prive de cette purification du cœur. Et le deuxième élément sur lequel il voudrait insister, c'est l'élément qui au contraire nous conduira à mettre en œuvre cette taskiya, cette purification du cœur. Et cet élément, c'est ce que l'on appelle la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui alimente notre piété. Taqwa, c'est quoi? La taqwa, c'est quoi? Eh bien, Mufti Sab, il nous explique que c'est une conscience de chaque instant. Une conscience permanente, que à chaque fois que nous ayons à prononcer un propos, à chaque fois que nous ayons à accomplir un acte, avant d'agir, en soi, au plus profond de son âme, on se pose la question, est-ce que ce que je vais faire va plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce que plutôt ça va être une cause de sa colère? C'est donc une conscience permanente de chaque instant qui alimentera et qui nous conduira vers cette taqwa. Pour donner une image, il nous dit que la taqwa, c'est en quelque sorte l'armure qui protège le corps. Mais contrairement à l'armure que peut porter un soldat ou autre, qui lui, lorsqu'il se trouve dans la solitude, il enlève et pose son armure. Le croyant, lui, son armure qui protège son cœur, cette taqwa, jamais il ne pourra l'enlever de son cœur. Même quand il se trouve dans la solitude, il devra toujours se poser la question de savoir, est-ce que ce que je vais faire plaît ou non à Allah? Parce qu'il est conscient, encore une fois, qu'il va devoir se rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala et répondre de chacun de ses actes. Et pour avoir une illustration de ce que cette taqwa peut produire comme attitude exemplaire, eh bien il suffit de revenir vers cette histoire qui est bien connue, qui s'est produite à l'époque d'Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le célèbre calife, ce dirigeant que le monde n'a pas vu de semblable aujourd'hui. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il avait l'habitude, lorsqu'il était Amir al-Mu'minin, de circuler dans les rues de Médine pour essayer de se renseigner et de s'informer sur la condition de ceux qui étaient sous sa responsabilité. Et un beau jour, après la salat al-Fajr, donc le matin, il est en train de circuler, il arrive devant une maison et de l'extérieur, il entend deux femmes qui sont en train d'échanger, de discuter. Il entend de la voix de deux femmes. Et c'est une mère qui discute avec sa fille. Et en fait, ce sont des personnes qui vont vendre du lait. Et la maman dit à sa fille de rajouter un peu d'eau dans le lait pour bien évidemment l'augmenter en volume et pour pouvoir avoir un peu plus d'argent. Et la fille, il entend la fille qui répond à sa maman qu'il y a un ordre direct de la part du calife, de Amir al-Mu'minin, Omar ibn al-Khattab, qui nous a interdit de faire cela. C'est une forme de tromperie, donc Omar ibn al-Khattab nous a interdit, je ne peux pas le faire. Et sa maman qui lui réplique que « Mais Omar, il n'est pas là. Omar ne te voit pas. Donc il n'y a pas de souci, fais-le. » Et là, la réponse extraordinaire de la fille. La fille qui répond à sa maman que si Omar radiyallahu anhu n'est pas là, mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est là. Et Allah, il voit tout ce que je fais, et donc je ne peux me permettre d'aller vers cette dérive. Eh bien, c'est exactement cela, la taqwa. Et regardez Omar radiyallahu anhu, comment il a valorisé cette attitude. Omar radiyallahu anhu va rentrer chez lui, va se renseigner qui est donc cette famille et qui est donc cette fille. Et dès qu'il aura l'information, il présentera une demande de mariage pour cette fille, pour son propre fils. Et c'est de la descendance de ce couple que viendra au monde l'autre calife que vous connaissez bien, Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah. हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उनको ज़ख्मी किया गया और उसी ज़ख्म के अंदर उनकी शहादत भी वाक़ई हुई, तो उस दौरान लोग आकर हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात पर तारीफ़ करते हैं कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत उठाई है, आपने खलीफा बनकर अदल से काम लिया है। ऐसे अदल से कि फरमाया करते थे कि अगर फुरात के किनारे एक कुत्ता भी अगर भूखा मर जाए तो मुझे खतरा है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे पूछेगा कि ऐ उमर, हमने तुम्हें हाकिम बनाया था, तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर एक कुत्ता भूखा मर गया, तो मुझसे अल्लाह ताला पूछेगा। तो अल्लाह ताला ने आपको इतने अदल व इंसाफ की तौफीक अता फरमाई। तो हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में ये फरमा रहे हैं कि लवदित्तु अन्नी उतरकु कफ़ाफ़न ला अलैया वला ली,
یعنی میں تو اس بات کو بھی غنیمت سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ برابر سرابر چھوڑ دے، نہ میرے اوپر کوئی گناہ ہو نہ مجھے کوئی ثواب ملے، اس لیے کہ ہر وقت یہ فکر دامنگیر تھی کہ کسی وقت تو میرا کوئی عمل نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ ہو۔ یہ کھٹک، یہ خلش، جو یہ فکر جو انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے رضا کے مطابق ہو، یہ ہے جس کا نام تقویٰ ہے، اور اسی تقویٰ کے ذریعے آدمی تزکیے کی منزل تک پہنچتا ہے۔ آپ اس کی ایک مثال یہ سمجھیں کہ ہر انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے تو گھر میں اپنے آپ کو بالکل آزاد محسوس کرتا ہے، کوئی اس کو دیکھے نہ دیکھے، کوئی جو بھی کپڑے بھی جیسے چاہے پہن لیے، جس طرح چاہا لیٹ گیا، جس طرح چاہا بیٹھ گیا، جس طرح چاہا چلنے شروع ہو گیا۔ باہر نکلتا ہے تو ذرا تھوڑا سا ایک ریزرو ہو کر نکلتا ہے، پھر وہاں سے، لیکن اس میں بھی اس کو آرام سے چلتا پھرتا ہے۔ فرض کرو کہ آپ کو اچانک دعوت مل جاتی ہے کہ مثال کے طور پر فرانس کے صدر نے آپ کی دعوت کی ہے، اور آپ کے لیے آپ کو دعوت اس کے جو ایوان ہے اس کے اندر اس کو دعوت دی گئی ہے۔ جب آپ وہاں داخل ہوں گے تو اس وقت آپ کی چال ڈھال اس چال ڈھال سے بدرجہ مختلف ہوگی جو سڑکوں پر چلتے وقت ہوتی ہے۔ جب داخل ہوں گے تو ریزرو ہو کر ہوں گے، اس بات کا خطرہ ہوگا کہ بھئی کوئی بات ایسی نہ ہو جائے جو یہاں کے آداب کے خلاف ہو، کوئی آداب کے خلاف بات ہو جائے گی تو وہ میرے لیے نقصان دہ ہوگی۔ تو یہ جو کھٹک دل میں پیدا ہو گئی ہے اس ایوان میں داخل ہونے کے نتیجے میں، یہ کھٹک کا نام ہے خلش، اور اسی کا نام ہے تقویٰ۔ اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب یہ معاملہ ہو تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور یہ خلش ہر مسلمان کو ہر وقت اس لیے ہونی چاہیے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے، اور برحق عقیدہ ہے کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ میں اس کی اپنی مثال، میں کئی سال پہلے مجھے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں جو ٹیکساس کے اندر ناسا جو ایٹمی سیاروں کا مرکز ہے، وہاں پر ہمیں لوگ لے گئے، اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بالکل عین جو اس کا کنٹرول روم ہوتا ہے وہاں تک بھی جو ٹورسٹ ہے وہ جا کر دیکھ سکتے تھے کنٹرول روم۔ اب پتہ نہیں اب وہ اجازت ہے یا نہیں ہے، لیکن اس وقت تک جا سکتے تھے۔ جب ہم اس ہال میں داخل ہو رہے تھے تو وہاں بس وہاں میرے ساتھ نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی سیکورٹی چیک ہے، نہ کوئی فوج کھڑی ہے، نہ کوئی اور سیکورٹی کے انتظامات ہیں، صرف ایک بورڈ لگا ہوا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یو آر واچ۔ کیا اس میں یہ بورڈ لگایا ہوا تھا، بس جب آدمی اس کو دیکھتا تھا یو آر واچ تو اس کو دیکھتے ہی کھٹک جاتا تھا کہ بھائی ہماری نگرانی ہو رہی ہے، لہذا وہ بہت ہی سنبھل کر آگے جاتا تھا۔ تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ یہ انہوں نے جو بورڈ لگایا ہوا ہے، یہ بورڈ انسان کے اندر یہ کھٹک پیدا کر دیتا ہے۔ اگر یہی بورڈ انسان اپنے دل میں لگا لے کہ یو آر واچ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے۔ Toujours concernant Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, vous connaissez, donc il a été grièvement, mortellement blessé. Et lorsqu'il était durant ces derniers jours, donc il est alité, il y a de nombreuses personnes qui étaient venues lui rendre visite. Et les personnes qui venaient lui rendre visite, notamment, faisaient ses éloges par rapport à la justice dont il a témoigné durant son califat. Cette justice qui était telle que Omar, radiyallahu anhu, lui-même, il disait que si jamais, alors que je suis responsable de la communauté, un chien arrive à mourir de soif sur le bord de l'Euphrate, eh bien je me sentirai responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'était la conscience d'Omar ibn al-Khattab lorsqu'il était dirigeant. Et donc cette conscience lui a permis de faire preuve d'une justice extraordinaire, d'une équité inégalable dans l'histoire de l'humanité. Eh bien les gens donc lui disent que voilà, alhamdulillah, toi en quelque sorte tu as réussi parce que tu as été extrêmement juste. Vous savez ce que Omar radiyallahu anhu il va dire aux gens à ce moment-là? Que moi, le seul désir que j'ai, le seul espoir que j'ai, j'aimerais bien que au moins Allah me laisse partir
et qu'il n'ait rien à me reprocher, et même s'il n'a rien à m'accorder, que je n'ai rien de positif mais rien de négatif, c'est-à-dire que je sois juste devant Allah subhanahu wa ta'ala, que je n'ai rien à mon encontre, et même si je n'ai rien en ma faveur, ça fait rien, mais juste que j'arrive à m'en sortir de cette situation devant Allah, c'est tout ce que j'espère. Regardez, ça c'était la conscience d'Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, tellement il avait cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui. Et donc, Mufti Sabi dit que cette conscience, ce souci qui doit animer le cœur de façon permanente et qui va nous conduire à privilégier ce qu'Allah veut de nous, ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est cela que l'on appelle la taqwa, et c'est cela qui va nous conduire dans les différents niveaux de la tazkiya. Et pour nous faire comprendre un peu toujours cet état d'esprit, cette conscience que représente la taqwa, Mufti Sabi donne un autre exemple de la vie quotidienne. Il dit, regardez, quand on se trouve chez soi, dans l'intimité de son foyer, on s'habille comme on veut, on fait ce qu'on veut, on s'allonge comme on veut, on est libre. Ensuite, ça c'est donc un premier niveau de conscience, très élargi lorsqu'on est chez soi. Lorsqu'on sort dans la rue en public, c'est différent. Là, on fait quand même un peu plus attention à son apparence. Malgré tout, on se garde une marge de liberté. Même parfois, quand on marche dans la rue, surtout ici en France, on se permet de s'habiller n'importe comment et de faire n'importe quoi. D'accord ? Et après, il y a le troisième niveau. Le troisième niveau, c'est qu'on est invité officiellement par une personnalité, donc que ce soit par le président ou par quiconque d'autre. Et là, on sait bien que lorsqu'on va se rendre là où on est invité, il y a des étiquettes, il y a un protocole à respecter. Et à ce moment-là, la conscience dont on fera preuve dépassera de loin tout ce qu'on a pu ressentir lorsqu'on était simplement dans la rue. Eh bien, c'est cette conscience que l'on a de faire très attention aux moindres détails lorsqu'on a une invitation officielle. Eh bien, quand on applique cette conscience à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cela que l'on appelle la taqwa. Et la taqwa, donc, elle est indispensable, elle est nécessaire de la part du croyant et de la croyante à chaque instant. Pourquoi ? Tout simplement parce que cela fait partie de notre croyance et de notre conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on est tous sous surveillance constante de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous surveille constamment. La conscience que l'on doit avoir envers lui doit également être constante. Et il rappelle une anecdote pour nous faire comprendre. Donc, il nous dit qu'une fois, il y a plusieurs années de cela, il était allé aux États-Unis, donc en visite au Texas, et on lui avait amené visiter la NASA, donc les locaux de la NASA. Et à l'époque, il dit qu'on avait même l'autorisation de se rendre dans la salle de contrôle, l'endroit le plus crucial. Soit pas sûr que ce soit toujours le cas, mais bon, on pouvait y aller. Mais ce qu'il avait remarqué, ce qui était étonnant, c'est que pour entrer dans la salle de contrôle de la NASA, il n'y avait aucun garde, pas de policier, pas de soldat, rien. Il y avait juste une plaque en rouge sur laquelle il était écrit « Vous êtes sous surveillance ». C'est tout. Et il dit que chaque personne qui entre dans la salle de contrôle, uniquement en voyant cet avertissement que vous êtes sous contrôle et sous surveillance, ça suffit pour le calmer, pour faire en sorte que dans la salle de contrôle, eh bien, il fasse très attention à son attitude. Et à ce moment, il dit qu'il avait eu cette idée qui était venue en tête, qui se disait que si chaque croyant, il arrivait à placer une plaque de ce genre dans son cœur, que tu es sous surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon permanente, eh bien, on arriverait justement à cet état que l'on appelle la taqwa. जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ये तकवा की नेमत अता फरमा देते हैं, तो उनके हर वक्त हर आन उनके दिल में ये कांटा खटकता रहता है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसमें आया वो काम भी सही है कि नहीं, उसकी नीयत भी सही है कि नहीं, और अगर कोई बात उसके खिलाफ हो जाती है तो फिर उसकी तलाफी के लिए बेचैन हो जाते हैं। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बड़े ज़बरदस्त इमाम हैं। उनके ज़माने में एक बड़े बुज़ुर्ग का इंतकाल हो गया और उनके नमाज जनाजा में लोग शरीक होने के लिए अपनी बहुत बड़ी सआदत समझते थे। उनको दावत दी कि आप नमाज जनाजा में चलें, तो हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैं इस वक्त नहीं जा रहा। तो लोगों ने भी हैरत का इज़हार किया, इतने बड़े बुज़ुर्ग का इंतकाल हुआ है, उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए। बाद में लोगों ने पूछा कि आप क्यों नहीं गए, तो एक जुमला बोला कि लम तहज़ुरनी निय्या, यानी मेरी दिल में नीयत पैदा नहीं हुई थी। अमल तो अल्लाह ताला के यहाँ वो मकबूल होता है कि जो खालिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए हो, लेकिन अगर महज इसलिए हो वो लोग कह रहे हैं लिहाजा अगर मैं नहीं जाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे, तो ये फिर इखलास ना हुआ, और जब इखलास ना हुआ तो वो अमल के अंदर सवाब ना हुआ तो नमाज जनाजा पढ़ने से जाने के लिए क्या फ़ायदा। ये खटका लगा हुआ है
दिल में कि कोई अमल बगैर इखलास के ना हो और अमल कोई ऐसा ना हो कि जो अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाला हो, जिसके नतीजे में मुझे आखिरत में जवाबदेह होना पड़े। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़े तीर अंदाज थे, यानी तीरंदाजी में बड़े माहिर थे। वो तीरंदाजी किया करते थे, उसकी मशक करते थे। एक मरतबा इत्तफाक से उनका तीर जो है वो किसी शख्स के लकड़ी के पुल पर जाकर लग गया और उसके नतीजे में वो पुल जो है वो गिर गया तीरंदाजी के नतीजे में। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उस पुल की सारी कीमत उसके सामने पेश की। उसने कहा कि हज़रत ये पुल की कीमत तो कोई हकीकत नहीं रखती, आपके तो जान भी कुर्बान है, आप तो हमारे मुक्तदा हैं, जान भी कुर्बान है। कहा कि नहीं, मेरा दिल नहीं मुतमईन होगा जब तक कि तुम मुझसे इसका मुआवजा नहीं ले लोगे, क्योंकि मेरे दिल में यह खटक रहेगी सारी ज़िंदगी कि मैंने किसी का पुल तोड़ दिया था, किसी को तकलीफ पहुंचाई थी। तो ये खटक जो हर वक्त हर अमल के अंदर इंसान के दिल में पैदा हो जाती है, इसका नाम तकवा है। Et donc, Mufti Sahab, il dit que ceux et celles à qui Allah subhanahu wa ta'ala accorde donc ce trésor de la taqwa, eh bien, justement, ils ont, comme on l'a rappelé, ils ont ce souci permanent. Ce souci permanent de toujours se demander, est-ce que ce que je fais est bien, est-ce que ce que j'ai fait est bien, ou est-ce que j'ai plutôt fait quelque chose qui ne convient pas à mes engagements envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous donne des exemples. Il nous donne notamment l'exemple, et donc, lorsqu'on aura ce souci permanent, eh bien chaque action que l'on va produire, on va se soucier autant pour la forme de l'action que pour l'intention qui va motiver l'action. Parce que, encore une fois, nous avons cette conscience envers Allah que s'il y a juste la forme mais qu'il n'y a pas la sincérité, il n'y a pas cette intention de se rapprocher d'Allah, eh bien il y aura un manque et on aura à répondre. Et là il nous donne des exemples. Il nous dit que regardez l'exemple de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, savant très illustre, très connu, qu'à son époque il y avait une personne pieuse qui était décédée, une personne connue pour sa piété qui était décédée, et donc tous les gens étaient en train de partir pour ses funérailles. Et lui, il n'était pas parti pour les funérailles, il y avait des gens qui étaient venus lui dire que voilà, tu ne pars pas aux funérailles, et à ce moment il avait dit que non, il ne part pas. Il avait dit qu'il n'avait pas l'intention de partir, et quand on lui a posé la question pourquoi il n'allait pas aux funérailles, eh bien il avait dit une parole très simple, lam tahzurni niya, qu'en fait, le fait de partir pour ses funérailles, eh bien la motivation adéquate n'est pas venue dans mon cœur. En fait, à ce moment-là, si jamais il partait, c'était à cause de la crainte des critiques des gens. C'était que si je ne vais pas, qu'est-ce que les gens vont dire? Et lui, il a expliqué que cette crainte du regard des gens est contraire à la sincérité que je dois à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il n'a pas accompli l'action à cause de la crainte de sombrer donc, dans cette ostentation et dans la crainte du regard des gens. Et deuxième exemple, c'est l'exemple de l'imam Bukhari, rahimahullah. L'imam Bukhari, rahimahullah, qui était un excellent archer. Et donc, qui avait l'habitude de s'entraîner au tir à l'arc. Et une fois, alors qu'il était en train de s'entraîner, eh bien, il a porté préjudice au bien de quelqu'un. Il y avait le pont de quelqu'un qui était suspendu quelque part. Et à cause du tir par erreur, eh bien, il a fait tomber le pont qui était suspendu et le pont s'est brisé. Et donc, il est allé voir le propriétaire et il lui a proposé un dédommagement complet du pont. Et le propriétaire, connaissant que c'était Imam Bukhari, pour qui il avait beaucoup de respect, lui dit non, moi je suis prêt à sacrifier ma vie pour toi. Ce que tu as détruit là, c'est rien du tout. C'est rien du tout, laisse tomber. Et regardez ce que l'Imam Bukhari lui dit non, je ne pourrais pas vivre avec ça. Je ne pourrais jamais vivre avec cette conscience que j'ai causé du tort au bien, au patrimoine de quelqu'un. Et donc, il a insisté pour que la personne prenne la compensation parce que justement, il avait cette conscience devant Allah qu'un jour, il pourrait être questionné par rapport au fait qu'il a causé du tort à autrui. Et donc, cette conscience permanente, ce souci qui nous empêche en quelque sorte de dormir, c'est cela que l'on appelle la taqwa. अब आखिर सवाल इस सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि ये फिक्र, ये तकवा, ये खलिश कि मेरा कोई काम अल्लाह ताला की रज़ा के ख़िलाफ़ ना हो, ये कैसे पैदा हो, इसका तरीक़ा क्या है? और यही दर हकीकत हमारे लिए सबक है। अल्लाह तबारक व तआला हमें उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये कैसे पैदा हो? हुज़ूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एहसान
حدیث جبرائیل کے اندر فرمایا کہ احسان کیا ہوتا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اگر جب تم نماز پڑھو یا جب تم کوئی عبادت کرو تو ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو آنکھوں سے، اور اگر یہ تصور جمانا تمہارے لیے مشکل ہو تو کم از کم یہ تصور کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کی تفسیر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور یہاں پر تعبد اللہ کے اندر، عبادت کے اندر ساری جو ظاہری عبادتیں وہ بھی داخل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر وغیرہ، اور ساری زندگی انسان کی اگر دیکھا جائے کہ مسلمان کی وہ تو عبادت اس معنی میں ہے کہ جو کام بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت ہی لکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی دیتے ہو محبت سے تو وہ بھی عبادت ہے۔ ماں باپ کو کس کے اوپر اگر تم نگاہ ڈالتے ہو محبت سے تو وہ ایسا ہے جیسے حج اور عمرے کا ثواب تمہیں مل گیا۔ تو ایک مسلمان کی زندگی کے سارے پہلو عبادت ہیں، لہذا ہر جگہ یہ تصور کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کا نام ہے احسان، اور اس کو حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں جو میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح عرض کرنے کی اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ Et donc, quand on a compris que la taqwa, c'est cette conscience, c'est ce souci permanent, eh bien, la question fondamentale, bien évidemment, qui se pose à nous, c'est celle de savoir comment acquérir, comment développer cette taqwa. Et cette taqwa qui nous conduira à atteindre l'état d'ihsan, l'excellence, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a défini comme étant constitutif de 2 niveaux. An ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit que al-ihsan, c'est d'adorer Allah comme si on le voyait. Premier niveau. Et deuxième niveau, car même si on ne le voit pas, on se doit de rester conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, nous voit. Et donc, Mufti Sab, il rappelle que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de l'adoration d'Allah. Mais adorer Allah, ici, a un sens très élargi. L'adoration d'Allah, dans ce hadith, ne désigne pas seulement les actes cultuels et rituels que l'on connaît habituellement. Ici, le mot ibada désigne toutes les actions que l'on a accomplies avec l'intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça englobe aussi les actions de la vie quotidienne. Et vous connaissez que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a parlé du mérite, par exemple, qu'il y a pour un homme de mettre une bouchée de nourriture dans la bouche de sa femme. En soi, cela peut devenir un moyen de se rapprocher d'Allah. Qu'il y a un mérite exceptionnel pour un enfant à porter un regard de compassion envers ses parents. Donc tous ces éléments peuvent entrer dans la ibadah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce que l'on veut, la finalité, c'est d'arriver à développer ce ihsan, cet état de conscience permanente dans l'adoration d'Allah. Et pour y arriver, il y a donc 3 moyens qu'il va nous présenter, Inch'Allah, qu'Allah nous accorde l'opportunité de mettre en œuvre. یہ تینوں باتیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان میں سے 2 خاص طور پر ایسی ہیں کہ بہت ہی آسان ہیں، ان پر عمل کرنے میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، صرف توجہ اور صرف اہتمام کی بات ہے۔ اگر وہ توجہ اور اہتمام انسان کر لے تو انشاءاللہ وہ تقویٰ کی دولت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر انسان غور کرے تو ہر لمحے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتوں میں انسان ڈوبا ہوا ہے کہ اس کا شمار ممکن نہیں ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، سر سے لے کر پاؤں تک کیا کیا عضو اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں۔ یہ آنکھ ہے، یہ پیدائش کے وقت سے کام کر رہی ہے اور اس کے ذریعے ہم جو چاہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، اور یہ ایسی نعمت ہے، ایسی آٹومیٹک اللہ تعالیٰ نے مشین بنائی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے ارادے کے بغیر، ہمارے سوچے سمجھے بغیر یہ اس طرح کام کرتی ہے کہ خود بخود یہ دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے۔ مجھ سے ایک آنکھ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ذکر کر رہے تھے کہ جب انسان آنکھ سے روشنی میں اگر ہوتا ہے تو آنکھ جو ہے، آنکھ کی جو پتلی ہے وہ سکڑتی ہے، اور جب اندھیرے میں جاتا ہے تو وہ پھیلتی ہے۔
خود بخود اللہ نے نظام ایسا کر رکھا ہے، جب پھیلتی ہے تو پھر اندھیرے میں بھی کچھ نہ کچھ نظر آنے لگتا ہے، اور روشنی میں آتی ہے تو سکڑ جاتی ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ اس سکڑنے اور پھیلنے کے دوران جو رگوں کی حرکت ہوتی ہے، پٹھوں کی جو حرکت ہوتی ہے، وہ اس سکڑنے اور پھیلنے کے درمیان 7 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے، اور 7 میل کا فاصلہ طے کر کے ہمیں دکھانے کی نعمت سے سرفراز کرتی ہے. قدر چونکہ بے مانگے مل گئی، بغیر کسی پیسے کے مل گئی، اس واسطے ہم اس کی قدر نہیں پہچانتے. اس سے قدر پوچھو جو اس بینائی سے محروم ہے. اگر فرض کرو ہمارے آپ کے ساتھ خدا نہ کرے یہ واقعہ پیش آ جائے کہ بیٹھے بیٹھے بینائی چلی جائے، دیکھنا بند ہو جائے، تو اس بینائی کو واپس لانے کے لیے ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی خرچ کرنے کو تیار ہو جائیں گے. میری ساری دولت لے لو مگر میری بینائی مجھے واپس کر دو. یہ ایک عضو جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس کی قدر ہم نہیں پہچانتے. اس کی اتنی بڑی نعمت ہے دیکھنے کے ذریعے. کیا نعمت آتی ہے؟ زبان سے ہم بول رہے ہیں، جو چاہتے ہیں بولتے ہیں، کوئی اس بولنے کے اوپر قدغن نہیں ہے. اگر یہ بولنے کی طاقت ختم ہو جائے، ان سے پوچھو جن کو فالج ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بولنے سے معذور ہو جاتے ہیں، تو ان کو یہ بولنے کی نعمت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ دولت وہ خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں چونکہ ملی ہوئی ہے لہذا اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. میں نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کا یہاں کوئی زبان کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے یا گلے میں، تو اس کی وجہ سے بول نہیں سکتے. میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے کہ جب ان کو بولنا پڑتا تھا تو وہ ایک آلہ ہوتا تھا، وہ آلہ اپنے گلے میں لگاتے اور لگا کر پھر بولتے. جب کوئی بولنا ہوتا پہلے وہ آلہ اٹھایا اور یہاں لگا کر بولنا شروع کیا. پھر بھی آواز ایسی نکلتی تھی جیسے بکرے کی آواز ہوتی ہے یا جانور کی آواز ہوتی ہے. بچے سنتے تو ہنستے تھے. اس کی بےتابی، اس کی بے چینی کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے ایک ایک چیز. قرآن کریم اس لیے فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. خود اپنے نفس کے اوپر غور کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہیں. سر سے لے کر پاؤں تک ہر عضو ایک جہان ہے، ایک کائنات ہے. اتنا زبردست میکینزم ہے کہ انسان اس کو سمجھنے سے بھی بعض اوقات عاجز ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بے مانگے ہمیں عطا فرما رکھا ہے اپنے فضل و کرم سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دل دیا ہے، اور یہ دل یعنی پورے جسم کے اندر سے خون کھینچتا بھی ہے، پمپ بھی کرتا ہے، واپس بھی بھیجتا ہے. تو جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جتنی دیر میں خون سارے جسم کے اندر سے وہ پمپ کرتا ہے اور نکالتا ہے اور پھینکتا ہے، اس کے ذریعے اتنا رگوں کا جال ہے جس تک پہنچتا ہے کہ وہ رگوں کو اگر ایک اسٹریٹ لائن پر پھیلایا جائے تو وہ دنیا کے گرد کئی چکر کاٹ سکتے ہیں. یہ 3 چکر کاٹ سکتے. 75,000 میل کا فاصلہ یہ خون طے کرتا ہے، اور ہر 1 منٹ کے اندر 72 مرتبہ دھڑکتا ہے. تو 72 مرتبہ یہ گویا تقریباً پورے دنیا کے مرتبہ 3 چکر کاٹتا ہے 72 مرتبہ 1 منٹ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام ہمیں دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف اگر دھیان کرے انسان تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ کس مالک نے مجھے یہ نعمت عطا فرما رکھی ہے. اس نعمتوں کا استحضار کر کے، اس کا شکر ادا کر کے، جب نعمتوں کا استحضار کرو گے، جب اس پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کے جلال، اس کے جمال، اس کے کمال کا ادراک ہوگا. اور اس کے نتیجے میں انسان کے اندر یہ خود بخود یہ بات پیدا ہوگی کہ جس مالک نے مجھے یہ نعمت دے رکھی ہے میں اپنی زندگی اس کی مرضی کے خلاف کیسے گزاروں. یعنی جب اندھیرے سے روشنی میں جاتے ہیں، روشنی سے اندھیرے میں جاتے ہیں تو یہ جو پتلیاں ہیں یہ پھیلتی ہیں. تو اس کے جو اعصاب ہیں اور رگیں ہیں وہ اتنی ہیں کہ اگر ان کو اسٹریٹ لائن پر پھیلایا جائے تو وہ 7 میل کا فاصلہ طے کریں.
Donc Mufti Sab, il nous dit qu'il a évoqué 3 moyens qui nous permettront, Inch'Allah, de développer cette taqwa et d'atteindre cet état d'ihsan qu'on a évoqué. 2 moyens qu'il va évoquer, les 2 premiers moyens sont des moyens qui sont particulièrement aisés à mettre en œuvre, accessibles à tout à chacun. Ça ne demande aucune dépense, ça ne demande aucun effort particulier, ça demande juste un peu d'attention. Le premier moyen, c'est d'alimenter sa conscience par rapport aux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. Ça, c'est le premier moyen pour nous aider à développer cette conscience envers Allah subhanahu wa ta'ala. Si on essaie de réfléchir et de penser au nombre de bienfaits, non pas en dehors de notre corps, mais même juste dans notre corps, en s'en tenant à notre propre organisme, on n'arriverait pas à énumérer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah il le dit lui-même dans le Coran. Et là, il nous donne des exemples. Il nous dit que prenez de la tête aux pieds, essayez juste d'imaginer quelques organes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, et vous verrez combien ces organes, combien Allah subhanahu wa ta'ala il a créé cette perfection, et qu'il a créé en nous, alors que nous ne sommes capables de rien. Juste pour prendre par exemple l'exemple de l'œil. Il dit qu'une fois un ophtalmologue lui disait que l'œil humain, il fonctionne sans même que l'être humain ait à faire un effort d'anticipation, de volonté. L'œil, il fonctionne. Juste, vous connaissez le mouvement quand on se trouve dans le noir et qu'on passe dans la lumière, tous les mouvements qui se passent au niveau des yeux, au niveau de l'iris, de la rétine, etc. Eh bien, l'ophtalmo lui disait que juste si on prenait les petites veines et les petits éléments de l'œil qui sont mis en œuvre pour la dilatation de l'œil, on les mettait l'un à côté de l'autre, ça atteindrait une dizaine de kilomètres. Et ça se trouve juste dans notre œil, et c'est mis en œuvre uniquement lorsqu'on passe dans la lumière. On quitte l'obscurité, on passe de la lumière, sans même qu'on ait à faire quoi que ce soit, tout cet mécanisme se met en œuvre. On peut prendre l'exemple de la langue. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé cette faculté d'élocution. Encore une fois, il nous a donné cette liberté de parler, de dire, de nous exprimer. Ce sont des bienfaits dont nous ne mesurerons pas la valeur, sauf quand nous les perdons. Quand nous les perdons, nous serions prêts, que ce soit la vue ou que ce soit la faculté d'élocution, on serait prêt à dépenser des centaines de milliers d'euros juste pour les avoir en retour. Nous voyons autour de nous des gens qui parfois ont perdu donc la possibilité de parler directement et qui ont besoin donc d'avoir recours à des appareils pour pouvoir s'exprimer. Et vous voyez comment c'est difficile pour ces personnes. Déjà le fait d'avoir recours à l'appareil qu'ils mettent au niveau de la gorge pour pouvoir sortir un son qui malgré tout restera difficilement compréhensible. Et là on se rend compte que malgré toute la mécanique qui a pu être mise en place pour créer cette machine, elle n'équivaut en aucune façon à la mécanique naturelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait créée pour nous permettre de parler et de nous faire comprendre. On peut également regarder le cœur, le mécanisme que représente ce cœur qui est une pompe sanguine, qui pompe le sang pour permettre la circulation sanguine dans notre corps à 72 pulsions minutes, etc. Tous les éléments que nous connaissons. Et les médecins qui nous disent que, encore une fois, si on prenait toutes les veines et toutes les artères qui participent à la circulation sanguine, et on les mettait bout à bout, cela serait suffisant pour faire 3 fois le tour de la planète. Imaginez que pendant 1 minute, avec 72 pulsions par minute, donc le rythme cardiaque, ça veut dire que pendant 1 minute, c'est un peu comme si cela faisait 72 fois, donc 72 fois le tour de la planète, le sang qui circule dans notre corps. Et cela, encore une fois, sans que nous ayons à faire un quelconque effort, sans que nous ayons une quelconque maîtrise. Cela vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le premier moyen pour arriver à développer cet ihsan, c'est de réfléchir qui m'a donné tous ces éléments. Quel est ce Rabb, quel est ce Seigneur miséricordieux qui, par sa miséricorde infinie, qui m'a octroyé toutes ces faveurs dans mon corps. On en a mentionné seulement 3, on pourrait en mentionner énormément. Et donc, quand on est conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, par sa bonté, par sa générosité, il nous a accordé toutes ces faveurs, cela forcément nous conduit à faire preuve de gratitude envers lui et donc à faire attention durant chaque minute de notre existence à ne rien faire qui aille à l'encontre de sa volonté. गरज इंसान अगर गौर करे तो हर वक्त इंसान के ऊपर मुख्तलिफ नेमतों का एक जहान अल्लाह तबारक व तआला ने बरसा रखा है, लेकिन हमारा हाल यह है कि हम गफलत के आलम में अल्लाह ताला की नेमतों को इस्तेमाल करते हैं। अब ये पानी का गिलास है, इसमें पानी एक घूंट लेकर हमने पी लिया और एक लम्हे के अंदर ख़त्म कर दिया, लेकिन कभी सोचा कि ये पानी हमारे मुंह तक पहुंचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या निज़ाम बनाया है।
समंदर के अंदर पानी का जखीरा अल्लाह तबारक व तआला ने रखा, जखीरा वैसे रखते सड़ जाता, हजारों लाखों करोड़ों जानवर उसमें रोजाना मरते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कड़वा बना दिया, उसमें ऐसा तरीका रख दिया कि हजार लाखों करोड़ों जानवर मरते हैं मगर वो खराब नहीं होता। वहां से अल्लाह तबारक व तआला मानसून के जरिए बादल उठाते हैं और उस मानसून में ऑटोमेटिक ऐसी मशीन लगी हुई है कि वो उसके नमकीनी को खत्म कर देती है। फिर अल्लाह ताला ने बादलों की शक्ल में एक मुफ्त कार्गो सर्विस मुहैया कर रखी है कि मुख्तलिफ जगहों पर जाकर वो पानी बरसाए, पानी बरसा देते। एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला कहते पानी बरसा दिया, तुम खुद अब इसको इस्तेमाल करो, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से उसको पहाड़ों पर बसाया, पहाड़ों के ऊपर बर्फ की शक्ल में जमा दिया, कोल्ड स्टोरेज मुस्तकिल बना दिया और वहां से फिर गर्मी के जरिए पिघल पिघल कर दरियाओं के जरिए और फिर जमीन के अंदर कुएं के रगों के जरिए एक एक इंसान के पास पहुंचाया और फिर उसके जरिए तमाम शहरों तक पहुंचाकर जब हम एक घूंट पानी पीते हैं तो सारी कायनात की ताकतें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस घूंट को हमारे पास पहुंचाने में लगी हुई हैं। बस सिर्फ इतनी बात है कि पियो, लेकिन पीकर कह दो कि अल्हम्दुलिल्लाह। पियो, पीने से पहले कह दो बिस्मिल्लाह, मैं जो पी रहा हूं अल्लाह के नाम से पी रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल करम से मुझे मुहैया फरमाया। और जब पी चुको तो कह दो कि अल्हम्दुलिल्लाह। ये दो एतराफ तुमने कर लिए तो कम से कम इस नेमत का तुमने फिल जुमला शुक्र अदा कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों पर गौर करो, गौर करके उनके एक एक नेमत का शुक्र अदा करने की कोशिश आदत डालो। इसीलिए नबी करीम सरवर दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के साथ हमारा ताल्लुक जोड़ने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर दुआएं तलकीन फरमाई है। वो इसलिए फरमाई है ताकि तुम अल्लाह ताला की नेमतों को इस्तेज़ार करो। जब खाना सामने आए तो कहो कि अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिमा रज़क़तनी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। अल्लाह आपने अपने फजल करम से मुझे अता फरमा दिया। खा चुको तो कहो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये सब दुआएं इसलिए तलकीन फरमाई है कि आदमी गफलत की जिंदगी से निकले और अपने मालिक की नेमतों के ऊपर की तरफ मुतवज्जे हो और उसकी नेमतों का एतराफ करके उसका शुक्र अदा करे। Et donc, le problème que l'on a par rapport au bienfait, c'est ce que l'on avait évoqué tout à l'heure, c'est cette inconscience. C'est que l'on n'est justement pas conscient des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Mufti Sam nous donne l'exemple de ce verre d'eau. Le verre d'eau que l'on prend, que l'on porte à la bouche et que l'on boit. Nous ne sommes pas conscients que derrière ce verre d'eau, eh bien, il y a eu une accumulation d'éléments qui ont permis que cette eau arrive dans mon verre, d'éléments sur lesquels, encore une fois, au niveau individuel, je n'aurais eu aucun contrôle. L'eau, à l'origine, se trouve dans les océans. Des océans dans lesquels des millions d'animaux meurent chaque jour. Et pourtant, ça n'altère pas la purification de l'eau de l'océan. Néanmoins, il y a cet élément salé, de sel qui fait que l'eau n'est pas buvable. Allah subhanahu wa ta'ala, par le système d'évaporation, Allah a fait en sorte de purifier l'eau du sel qui s'y trouve. Ensuite, l'eau aurait pu rester au-dessus des océans. Mais non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en place un réseau de distribution gratuite par le biais des nuages. Allah subhanahu wa ta'ala le conduit là où il doit se trouver. Allah il aurait pu faire pleuvoir l'eau sur nous directement pour qu'on puisse le boire. Mais on n'aurait pas pu difficilement le stocker. C'est pour la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il fait également pleuvoir au-dessus des montagnes. Et là, on a en quelque sorte les congélateurs naturels. L'eau qui se retrouve donc sous forme de glace. Et en fonction du besoin, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que la glace donc se liquéfie, passe dans les rivières et que l'eau ensuite s'intègre également dans le sol et que en fonction du besoin, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne cette eau qui est potable. Lorsque nous prenons ce verre d'eau et que nous le portons à la bouche, nous n'avons pas forcément conscience de tout ce qui s'est passé. Et pourtant, ce sont des réalités que nous connaissons. Nous connaissons que tout cela s'est produit. Et c'est la raison pour laquelle donc quand on est conscient, et donc il nous exhorte à toujours méditer sur les bienfaits d'Allah. Et donc, quand on aura la moindre des choses que l'on puisse faire, quand on porte ce verre d'eau à la bouche, c'est de commencer par Bismillah, de prendre le nom d'Allah, d'être conscient que c'est Allah qui a permis que ce verre arrive là. Et quand on a fini de boire, de dire Alhamdulillah.
de remercier, de faire la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce verre d'eau qu'il nous a accordé. Et il en est de même pour les très nombreux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que lorsqu'on aura pris le nom d'Allah avant de débuter, et lorsqu'on aura remercié Allah subhanahu wa ta'ala après avoir complété notre besoin, eh bien on aura en quelque sorte exprimé notre gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on y réfléchit, vous regardez les invocations, les du'as que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées à différentes occasions, avant de manger, quand on a fini de manger, etc. Vous regardez le sens de ces invocations, c'est exactement ça. C'est pour nous pousser à avoir la conscience que nous sommes en train de bénéficier d'un bienfait inestimable de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, par exemple, quand on prend l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée, avant de manger, à la fin, ça se termine comment? Min ghayri hawli minni wala quwwa. Que l'on formalise, que l'on exprime clairement que Allah, gloire à toi qui m'a donné cette nourriture, sur laquelle je n'aurais pu jamais accéder uniquement par ma force, parce que je n'aurais pas eu cette force et je n'aurais pas eu ce pouvoir uniquement d'obtenir cette nourriture. Et donc cette conscience, le fait de réciter ces invocations et de penser, de méditer constamment sur les bienfaits d'Allah est déjà un premier facteur qui nous conduit à la conscience vers Allah subhanahu wa ta'ala. खुलासा ये कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों पर सोचने की आदत डालें कि क्या क्या नेमत मुझे मिली हुई है अल्लाह तबारक व तआला। और जब कोई अच्छी हालत हो, खुशी की हालत हो, तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने की, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। आप घर से निकले, कहीं जाना चाहते थे, सवारी अच्छी मिल गई, या अल्लाह आपका शुक्र है अच्छी सवारी अता फरमा। सवारी में बैठे, रास्ते के अंदर आपको जगह पहुंचना है, अल्लाह आपने अच्छी तरह पहुंचा, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, आपने अच्छी जगह पहुंचा दिया। घर में आप दाखिल हुए, घर में देखा कि सब लोग खैर आफियत से हैं, इत्मीनान से हैं, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, अल्लाह आपका शुक्र है कि इनको अच्छी हालत मुझे दिखाई। बच्चा खेलता हुआ अच्छा लगा, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, मेरा बच्चा अच्छा है, आफियत है, मुझे एक एक नेमत को, गर्मी लग रही थी, अल्लाह ने पंखा चला दिया जिसकी वजह से ठंडी हो गई, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। सर्दी लग रही थी, हीटर चल गया, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। जो भी नेमत हासिल हो रही है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की रट लगाएं कि हर लम्हे पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र ज़बान से निकल रहा हो। ये एक ऐसी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इसकी कदर व कीमत महज ज़बान से नहीं बताई जा सकती। इसके ऊपर अमल करके देखें और उसके नताइज देखें। अल्लाह तबारक व तआला ने शुक्र की ऐसी नेमत अता फरमाई है, इससे अपने अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ताल्लुक़ मजबूत होता है, उससे अल्लाह ताला की अज़मत, उसके जलाल, उसके जमाल, उसके कमाल, उसकी मोहब्बत दिल में पैदा होती है, जिसके नतीजे में तक़वा पैदा होता है। शुक्र की कसरत, और रात को सोने से पहले, ये तो दिन भर में जो अच्छी हालत हो रही है उसको उस पर शुक्र अदा करने की आदत डालें। रात को सोते वक्त जब सोने लगे तो चंद मिनट के लिए तसव्वुर करें, आज सुबह से लेकर मेरे बिस्तर तक पहुंचने तक मुझे अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतें दी। जब सुबह बेदार हुआ तो किस हालत में बेदार हुआ, नींद अच्छी आ गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। ताज़ा दम बेदार हुआ, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। घर वालों को आफियत से पाया, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। बाहर निकला तो जो मकसद था अल्लाह ताला ने वो पूरा कर दिया, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। घर में वापस आया तो अल्हम्दुलिल्लाह आफियत से पाया, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल। बिस्तर आरामदेह है, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। घर आरामदेह है, अल्लाहुम्मा लकल। ये रात को सोने से पहले चंद मिनट के लिए दिन भर की जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई हैं उनका तसव्वुर करके उस पर अल्लाह तबारक व तआला के नेमतों का शुक्र अदा करने की आदत डालें। इंशाअल्लाह आप देखिए, इस पर अमल करके देखिए तो आप देखिए कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक़ मजबूत होता है और उसके नतीजे में इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह तक़वा की दौलत हासिल होगी। Et donc, si on voulait résumer ce premier point, c'est que l'on doit prendre l'habitude de méditer sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir de là, la conséquence, c'est quand on a médité sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, de prendre cette habitude de toujours exprimer sa reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas compliqué, ça ne demande pas beaucoup de temps.
à chaque bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, et combien sont nombreux ces bienfaits qu'Allah nous accorde, à chaque bienfait, de prendre l'habitude de remercier Allah. Allahumma lakal hamdu wa lakal shukr. Quand on entre chez soi, qu'on trouve un environnement accueillant, une famille accueillante, qu'on voit nos enfants jouer, ça nous réjouit le cœur. Quand on trouve un endroit où on peut trouver du repos, quelle que soit la situation positive que l'on voit et que l'on vit, eh bien on exprime sa gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala et on fait ce que l'on appelle le shukr. Et Mufti Saab, il insiste sur ce point, il dit que le shukr, la valeur du shukr, la valeur d'exprimer sa gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala est inestimable, on ne peut pas la décrire. C'est quelque chose qui se vit. Et c'est la raison pour laquelle il nous dit qu'il faut prendre cette habitude, développer cette habitude de shukr, et vous verrez combien cela alimentera et nourrira le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala de votre cœur. Combien cela développera l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala de votre cœur. Et combien cela vous conduira et vous rapprochera de la taqwa. Et là, il nous donne un élément supplémentaire. Il dit que donc, en plus, à chaque instant de la journée, quand on a un bienfait, de remercier immédiatement Allah, de prendre également une petite habitude très légère. C'est d'avant de dormir chaque nuit, de prendre quelques minutes. On n'a pas besoin de quelques heures, quelques minutes pour mener une petite réflexion, une petite méditation. De penser aux bienfaits qu'on a pu bénéficier depuis le matin jusqu'au soir. De penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le matin, il nous a permis l'opportunité, il nous a redonné la vie, il nous a permis de nous réveiller, de nous déplacer, de faire ce que nous avions besoin en dehors de notre foyer, de rentrer chez nous et de trouver encore une fois un foyer, d'avoir tous nos besoins répondus, etc., etc. Tous les bienfaits qu'il nous a accordés jusqu'à ce que nous pouvons atteindre le lit le soir. De penser à tous ces éléments et d'exprimer ensuite notre gratitude à Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ces bienfaits. Ça, c'est un moyen très important qui nous permettra de développer cette taqwa dont on avait évoqué l'importance. Et il dit, mettez-le en application et Inch'Allah, vous verrez les fruits. मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने बात लंबी कर दी है और आप हज़रात शायद उकताने लगे हों या थकने लगे हों, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि पता नहीं फिर आपसे मुलाकात हो कि ना हो, फिर मौका मिले या ना मिले, इसलिए चंद मिनट और आपके लेना चाहता हूँ. अल्लाह ताला उसको भी सही तरीके से अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए. मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो बात छोटी सी है शुक्र की, लेकिन अगर इंसान के सोच का रुख इस तरफ मुड़ जाए तो उससे किस तरह अल्लाह तबारक व तआला के साथ राब्ता मजबूत होता है. एक मिसाल देता हूँ. मैं एक मरतबा मेरे शेख हज़रत आरिफी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू के साथ एक खाने पर वज़ू था. खाने पर तो हमने बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू कर दिया. तो हज़रत ने हमसे फरमाया कि देखो ज़रा ये तसव्वुर कर लो कि इस वक्त खाने के वक्त में क्या क्या अल्लाह ताला की नेमतें मुयस्सर हैं. एक तो ये कि खाना है, खाना ही नेमत है. अगर आदमी को खाना ना मिले तो मर जाए. खाना मिलना एक नेमत. फिर उस खाना लजीज है, लज्जत से खाया जा रहा है, ये दूसरी नेमत. खाना होता मगर लजीज ना होता तो अपनी जान बचाने के लिए खाना तो पड़ता, लेकिन लज्जत ना आती. तो लज्जत जो आ रही है दूसरी नेमत. तीसरी बात यह क्या कि भूख है, ख्वाहिश है. खाना हो भूख ना हो, भूख नहीं लगती. आला से आला खाना रखा हुआ लेकिन भूख ही नहीं लगती, तो उसकी लज्जत कैसे हासिल हो. तो भूख होना तीसरी नेमत. भूख भी है, खाना भी है, लजीज भी है, लेकिन कोई गम आ गया, कोई सदमा आ गया, कोई परेशानी आ गई तो सारा खाना बेकार हो जाएगा. आप उस गम सदमे की वजह से खाना खा नहीं सकेगा. तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई गम नहीं, कोई सदमा नहीं, कोई फिक्र नहीं. चौथी नेमत खिलाने वाला मोहब्बत से और इज्जत से खिला रहा है. खाना होता, लजीज होता और भूख भी होती और खाने की ताकत भी होती, कोई सदमा भी ना होता, लेकिन खिलाना वाला बेइज्जती से खिलाता, तौहीन करके खिलाता, तो वो खाना किस लायक, क्या खाने का उसमें लुत्फ है कि बेइज्जती से खिलाया. ऐ ताहिर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही. तो अगर बेइज्जती से खिलाता तो इज्जत से खिलाना है पांचवी नेमत. फिर अगर आदमी अकेला बैठ के खा रहा होता तो ठीक था, लेकिन
माशाल्लाह दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, मोहब्बत करने वालों के साथ बैठ के खा रहा है, ये छठी नेमत। तो इसी एक खाने के अंदर कितनी नेमतें अल्लाह ताला ने अता फरमा रखी है। जब इंसान की सोच का रुख इस तरह अल्लाह ताला की नेमतों की तरफ मुड़ जाता है तो उसका रूंगटा अल्लाह तबारक व तआला के लिए शुक्रगुजार होता है और इससे अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत होता है। Mufti Sabi s'excuse avant tout, il dit qu'il a été très long et il comprend que le public peut être fatigué, mais il s'excuse, il dit qu'il va prendre encore quelques minutes de votre précieux temps parce qu'il ne sait pas s'il aura l'occasion de nous revoir, mais Inch'Allah on aura l'occasion de le revoir rapidement. Donc il rappelle l'importance du shukr. Il fait un focus sur l'importance du shukr et il dit que le shukr, la reconnaissance envers Allah, quand on en parle, c'est un mot, reconnaissance. Oui, apparemment c'est quelque chose de pas très important. Et pourtant, comme il l'a dit, c'est un élément qui peut créer un lien avec Allah indéfectible. Et il nous donne un exemple, il raconte une anecdote, il dit qu'une fois il était avec son cher, donc son maître spirituel, et ils avaient assisté à une invitation. Ils étaient invités quelque part, et lorsque le repas a été servi, eh bien, comme d'habitude, ils ont dit Alhamdulillah. Donc ils ont remercié Allah subhanahu wa ta'ala, et son cher lui a fait une réflexion, lui a dit allons donc essayer d'énumérer un peu les bienfaits qui sont réunis là, en ce moment. Et donc là, ils commencent à parler, à réfléchir, ils disent que bon, premièrement, on va commencer à compter la nourriture, ce repas. C'est déjà un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir à manger, c'est un bienfait, parce que ne pas avoir à manger, c'est la mort. Donc c'est un bienfait. Deuxième bienfait, c'est que nous avons un repas, oui, mais le repas, il est savoureux. Il a du goût. Parce qu'avoir un repas, mais qui n'a aucun goût, ou pour lequel on n'a aucune attirance, on en est privé. Là, le fait que le repas soit savoureux, c'est un deuxième bienfait. Ensuite, il dit que ce n'est pas fini. Pour pouvoir savourer un repas savoureux, encore faut-il avoir faim. La faim est un troisième bienfait, parce que quand on a le ventre plein, vous mettez devant vous le plus beau et le plus attirant des plats, vous ne trouverez aucun plaisir. Troisième bienfait. Quatrième bienfait, il dit que le fait que l'on soit assis là et que l'on n'ait aucune préoccupation, aucun souci, c'est aussi un bienfait. Parce que vous avez devant vous un plat très attirant, vous avez faim, mais qu'en même temps, vous venez d'apprendre une très mauvaise nouvelle, ça vous affecte, la nourriture va rester là, vous n'allez pas pouvoir manger. Donc quatrième bienfait qui est réuni. Et ensuite, autre bienfait, c'est le fait que notre hôte, il nous donne à manger avec honneur et respect. Parce que vous avez un plat savoureux, mais quelqu'un qui vient et qui vous le balance au visage pour vous déshonorer, vous n'aurez pas envie de le manger, vous le mettrez de côté. Là, le fait que la personne nous invite, nous fasse honneur, que nous donne à manger, c'est un cinquième bienfait. Mais ce n'est pas fini, parce qu'il y a un sixième bienfait. Manger seul, c'est bien, manger avec des amis, c'est bien mieux. Le fait d'être en compagnie de ses amis et d'un groupe et de manger, c'est un sixième bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que quand on est conscient que là, en étant assis devant le repas, on a au moins, ça c'est ce qu'ils ont pu énumérer, au moins 6 bienfaits qui sont réunis, l'effet de cette conscience fera en sorte que quand on fera le shukr, on exprimera sa gratitude envers Allah, ce ne sera pas seulement la langue qui parlera. Ça va être chaque particule et chaque atome de notre corps qui exprimera la gratitude envers Allah, et forcément en retour, cela nous rapprochera et alimentera un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. दूसरी बात, 3 बातें मैंने अर्ज की थी। एक शुक्र की कसरत और उसकी आदत डालना। दूसरे दुआ, यानी अपनी हर छोटी बड़ी हाजत अल्लाह ताला से मांगने की आदत डालें। छोटी हाजत हो तो भी अल्लाह ताला से मांगे। देखो हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मरवी है कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा टूट जाए तो भी अल्लाह ताला से मांगो। जूते का तस्मा टूट जाए तो भी अल्लाह। अब सवाल यह है कि जूते का तस्मा टूट जाए तो आदमी को चाहे भाई मोची के पास जाए, उसका मरम्मत कराए, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से मांगो, या अल्लाह मेरे जूते का तस्मा टूट गया, इसको ठीक करा दीजिए, इसका असबाब मुहैया फरमा दीजिए। छोटी से छोटी हाजत भी अल्लाह ताला से मांगने की आदत डालें। मैं घर से बाहर निकला हूँ, या अल्लाह मुझे अच्छी सवारी मिल जाए, आराम के साथ घर पहुँच जाऊँ। मेरे जिस शख्स के पास मुझे जाना है, या अल्लाह मेरा काम जो मकसूद है वो हासिल हो जाए। घर में दाखिल हो रहा हूँ तो या अल्लाह रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़, अल्लाह मुझे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलिद व खैरल मखरज बिस्मिल्लाह वलिदना बिस्मिही खरजना। अल्लाह मैं घर के अंदर ऑफिस से दाखिल हूँ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह हमें तलक़ीन फरमाया, सुबह को बेदार हो तो ये कहो
मस्जिद को जाने लगो तो ये कहो, मस्जिद में दाखिल हो जाओ तो ये कहो, वहाँ से बाहर निकलो तो ये कहो, खाना सामने आए तो ये कहो। ये मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ जोड़ने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए एक आसान नुस्खा बताया है। मैं इसकी मिसाल दिया करता हूँ, आजकल मोबाइल आ गए हैं, मोबाइल टेलीफोन, तो आदमी जब घर से निकलता है तो हर थोड़ी देर के बाद उसने बटन दबाया और अपने घर से राब्ता कायम कर लिया और उससे पता चल गया, हाल अहवाल मालूम हो गया। घर वालों को भी ये ख्याल होता है कि भाई हमें ये बार बार फ़ोन कर रहा है, हमारे हालात मालूम कर रहा है, तो इससे आपस में मोहब्बतों में इजाफा होता है। अल्लाह ताला ने ये अदइया दुआएं ऐसी चीज़ बनाई है कि हर थोड़ी देर के बाद अल्लाह ताला से राब्ता इस्तवार हो। जब तुम मांग रहे हो ना अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ जोड़ रहे हो, उसको अपने मालिक मान रहे हो, उसको अपना रब और परवरदिगार मान रहे हो, उसके तरफ रुजू कर रहे हो, तो अल्लाह ताला इस बात से खुश होते हैं। हदीस में आया कि मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से न मांगे अल्लाह उससे नाराज़ होता है। और दुनिया में तो यह मामला होता है कि आदमी एक मरतबा मांगे किसी से, दूसरी मरतबा मांगे, तीसरी मरतबा मांगे, चौथी मरतबा मांगे, पांचवी मरतबा मांगे कि धक्के दे के बाहर निकाल दे, तूने आदत बना ली है मांगने की। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की दरगाह ऐसी है कि जितना मांगो अल्लाह तबारक व तआला उससे खुश होते हैं, और जो नहीं मांगता उसे नाराज़ होते हैं। लिहाजा छोटी से छोटी हाजत अल्लाह ताला से मांगने की आदत डाले जाए, और जो दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासूरा तजवीज़ फरमाई हैं उनका एहतमाम किया जाए। Donc ça c'était le premier point pour arriver à la taqwa, c'est de multiplier la gratitude et le shukr envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième moyen accessible à chacun de nous pour obtenir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de prendre l'habitude d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de faire des doigts. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala et lui exprimer chacun de nos besoins, aussi minimes puissent-ils être. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths, il nous enseigne de demander à Allah, même lorsque nous avons un problème au niveau de nos lacets, sur nos chaussures. Même cela, alors que nous, à notre niveau, on va se dire, oui, j'ai un problème avec mes lacets, je vais voir le cordonnier. Je ne vais pas demander à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de nous tourner vers Allah. Et de nous, bien évidemment, on va aller aussi chez le cordonnier, mais on demande à Allah de nous faciliter ce problème. Et donc, pour chaque élément de notre quotidien, de prendre l'habitude de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là aussi, quand on revient vers la sunna, on se rend compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné des centaines d'invocations quotidiennes, à réciter à chaque occasion, comme on l'a dit tout à l'heure, avant de manger, au milieu du repas, quand on a fini le repas, avant de dormir, quand il pleut, etc. À différentes occasions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné toutes ces invocations. Eh bien, ces invocations, elles sont fondamentales. Ne jamais minimiser les du'as. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, les invocations permettent de garder le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Mufti Sab, il nous donne un exemple. Il nous dit qu'aujourd'hui, nous avons donc le téléphone portable. Quand nous quittons chez nous, quand on quitte chez nous, le fait d'avoir ce téléphone, cet appareil, de pouvoir appeler à la maison, même quand on n'est pas chez soi, d'envoyer des SMS, des messages, etc., de garder le contact. Cela a pour effet d'augmenter l'attachement et l'amour dans le foyer. Ça permet d'augmenter l'amour dans le foyer. Et bien de la même façon, lorsqu'on garde le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il aime cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la hadith, il nous l'a dit clairement, Man lam yas'alillah yaghdab alayh. Contrairement aux règles de ce monde, celui qui ne demande pas à Allah, c'est contre lui qu'Allah est en colère. Alors que dans ce monde, lorsqu'on va solliciter la personne généreuse, quelle que soit sa générosité, au bout de la 5e, 10e fois, elle finira par se lasser et nous dire, bon, c'est bon, tu me lâches. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire, c'est quand on ne se tourne pas vers lui qu'il se met en colère. Donc ça, c'est le deuxième moyen, très facile, pour atteindre cette taqwa, c'est de faire les invocations, de prendre l'habitude d'invoquer Allah pour tous nos besoins, même les besoins les plus minimes, et de prendre l'habitude de réciter les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. आखिरी बात, तीसरी बात जो मैं अर्ज़ कर रहा, 3 बातें, तो उनमें से आखिरी और तीसरी बात यह है कि इंसान अपनी सोहबत को बेहतर बनाने की कोशिश करे। और ये जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वा का हुक्म भी दिया, उसके ऊपर अमल करने का तरीक़ा यह बताया कि सादिक़ीन की साथ रहो, सादिक़ीन की सोहबत इख्तियार करो। यानी अपना ज़्यादातर उठना बैठना, ज़्यादातर मेल जोल और ज़्यादातर इख्तिलात ऐसे लोगों से हो
کہ جن کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ صحبت اپنی درست کرنے کی کوشش کرو۔ حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی یعنی اچھا جس شخص کی نیک ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کہ مشک بیچتا ہو۔ اب تم اگر اس کے پاس رہو گے کبھی تو اگر چاہو گے تو مشک خرید بھی لو گے، اس کے مالک بن جاؤ گے، لیکن اگر خریدو بھی نہیں اس کے پاس بھی بیٹھو گے تو خوشبو آئے گی تمہیں، اس خوشبو سے تم لطف اندوز ہوگے۔ اور برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے کہ لوہار، اس زمانے میں لوہار جو ہے وہ دھونکنی سے کیا کرتے تھے، اس میں بڑی بدبو ہوا کرتی تھی، تو جیسے لوہار کے پاس بیٹھا ہو تو لوہار جب وہ دھونکنی دھونکتا ہے تو بعض اوقات تو چنگاری اڑ کر آدمی کے کپڑے ہی جلا دیتی ہے، لیکن اگر کپڑے بھی نہ جلائے تو کم از کم بدبو آتی ہے۔ تو لہٰذا اپنی صحبت اچھی رکھنے کی کوشش کرو، ایسے لوگ جن کو یہ فکر ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق ہو، ان کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ میل جول بڑھائیں، اپنے خاندانی تعلقات بھی اس میں قائم کریں اور صحبت کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ Et le troisième moyen, donc, pour atteindre la proximité, pour atteindre cette taqwa, eh bien, on peut l'extraire de ce verset du Coran que Mufti Sab, par lequel il avait commencé. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Allah, il s'adresse aux croyants et il dit: oh les croyants, craignez Allah, développez cette taqwa. Wa kunu ma'as sadiqin. Et juste après, Allah, il nous donne un moyen pour atteindre cette taqwa, c'est de rester en compagnie des véridiques, en compagnie des gens pieux, en compagnie de ces personnes qui justement sont animées par ce souci de réformer leur vie et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La compagnie des gens pieux et la compagnie des gens qui nous rapprochent d'Allah est fondamentale. L'effort que nous devrions essayer de faire dans notre vie, c'est de faire en sorte que la majeure partie de notre temps se passe en compagnie de ce genre de personnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith bien connu du Sahih Bukhari, il nous explique, il nous donne un exemple pour nous faire comprendre l'importance qu'il y a à avoir de pieux compagnons. Il nous dit en substance que le pieux compagnon, l'ami pieux, est comparable à un parfumeur. Le parfumeur, quand vous rendez chez lui pour acheter du parfum, il y a deux hypothèses. Soit vous rendez chez lui et vous achetez du parfum, et donc ça vous est profitable et bénéfique. Et même si vous n'y allez pas pour acheter du parfum, le seul fait de rester en sa compagnie, avec le parfum qu'il y a là où il travaille, eh bien, ça vous tranquillisera et ça vous apportera cette sérénité que vous cherchez. Eh bien, la compagnie du parfumeur, c'est quelque chose qui est bénéfique en soi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'opposé, il nous donne la compagnie de la mauvaise personne est comparable à la compagnie du forgeron. Le forgeron, quand vous allez chez lui, il aura son soufflet, il sera en train de souffler sur le feu. Il y a deux risques. Le premier risque, c'est que soit il y a une étincelle de feu qui vous brûle les vêtements. Et même s'il ne vous brûle pas, la moindre des choses que vous trouverez chez le forgeron, c'est la puanteur. Eh bien, ce n'est pas un environnement où c'est un environnement qu'on doit éviter. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre qu'on doit toujours privilégier la compagnie des gens pieux, la compagnie qui ont ce souci de la réforme, la compagnie des gens qui ont ce souci de la réforme et qui ont ce souci de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, de faire attention à leurs actes et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de bâtir notre vie entière, aussi bien nos relations familiales, etc., sur la compagnie de telles personnes. Ça, c'est le troisième moyen qui nous permettra d'atteindre la taqwa. اسی صحبت کے درست رکھنے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کی فکر کریں، جو بہت بڑی زبردست ذمہ داری ہے اور خاص طور سے ان ممالک میں اس کی بڑی ضرورت ہے کہ اپنے بچے بھی دینی فکر کے حامل ہوں۔ اس کے لیے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ کچھ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا رکھیں کہ جس میں ان گھر والوں اور بچوں کو انبیاء کرام کے، صحابہ کرام کے حالات پڑھائے جائیں، سنائے جائیں، اس سے ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں بھی یہ فکر پیدا فرمائے۔ ایک ایسا ماحول گھر میں بنانے کی کوشش کریں کہ اس میں ان کی دلچسپیاں اپنے سلف صالحین کے ساتھ ہوں۔ اور اسی کا ایک حصہ میں درخواست یہ بھی کروں گا کہ خاص طور میں سارے مغربی ممالک میں اپنے دوستوں اور بھائیوں سے یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو جو ایسی زبانیں ہیں جن میں کہ دین کی کتابیں ہیں، مثلا عربی
या उर्दू या फ़ारसी या अपनी या गुजराती ये किताबें, उन ज़बानों से उनको बिल्कुल नावाकिफ़ होने से बचाएं, क्योंकि जब उन ज़बानों से वो नावाकिफ़ हो जाते हैं तो उनका रिश्ता जो है वो उस वर्षे से कट जाता है, टूट जाता है। अल्लाह ताला ने दीन के ज़ख़ीरे इन ज़बानों के अंदर रखे हैं, लिहाजा इनसे उनको महरूम ना करें, इनको ज़रूर पढ़ाएं। बेशक आप यहाँ रहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि फ़्रेंच ज़बान आपका अच्छी तरह सीखें और फ्रेंच ज़बान के अंदर आपका कारोबार हो, लेकिन साथ ही एक अपने घर के अंदर माहौल भी ऐसा पैदा करें कि इन ज़बानों के ज़रिए दीन से रिश्ता उनका कटने ना पाए। और बच्चों के लिए इस्लामी स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा कायम करने की कोशिश करें। मैं अपने साथियों से ये अर्ज़ करता हूँ कि जब तक कि वो ये काम नहीं करेंगे उस वक्त तक बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होगा, बच्चों के साथ ज़्यादती होगी। हमारे आबा व अजदाद ने हमारे लिए दीन हमारा वर्षा छोड़ा और हम अपने बच्चों को दीन से बेजार करने का रास्ता इख्तियार कर ले तो कल अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे। लिहाजा उसका वाहिद रास्ता यह है कि इस्लामी स्कूल कायम हो। मुझे मालूम हुआ है माशाअल्लाह यहाँ पर इस्लामी स्कूल कायम है। अल्लाह तबारक व तआला उसमें तरक्की अता फरमाए और मुसलमानों को उस तरफ मुतवज्जह होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Et Mufti Sahab, les quelques conseils qu'il donne pour compléter, pour finir, il dit que dans l'importance qu'il y a à garder cette pieuse compagnie, eh bien, il y a 3 moyens pratiques à mettre en œuvre. C'est au niveau de la famille. Le premier moyen pratique à mettre en œuvre, c'est de faire un effort permanent sur nos proches, sur nos conjoints, sur notre conjoint, sur nos enfants, pour garder vivant l'esprit du dîn dans sa maison, l'esprit de la religion dans la maison. C'est-à-dire qu'on essaie de sacrifier un peu de notre temps quotidiennement pour passer en famille, pour parler du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour réciter et pour lire ensemble les récits des pieux personnages, les récits des prophètes alayhimus salatu wassalam, les récits des compagnons, les récits de tous les pieux et de nos pieux prédécesseurs, pour justement créer dans leur cœur et dans nos cœurs à tous l'attachement et le respect et de la considération pour ceux qui nous ont précédés. Ça aussi, c'est un moyen de mettre en œuvre cette pieuse compagnie. Premier moyen. Deuxième moyen, Mufti Sahab dit d'établir un lien entre nos enfants et la langue ou les langues dans lesquelles se trouve le patrimoine islamique, religieux. La langue arabe, la langue ourdou, donc pour ceux qui habitent au Pakistan, mais surtout la langue arabe. Il dit qu'apprendre la langue de notre pays, la langue française, bien évidemment, c'est très important. Mais il est également très important qu'au niveau de nos enfants, nous fassions un effort pour les lier avec une langue qui nous permettra d'accéder directement à la majeure partie de notre patrimoine religieux, notre patrimoine scientifique religieux, qui se trouve aujourd'hui en langue arabe ou en langue ourdou ou les autres langues que l'on connaît. En langue française, c'est très limité. Donc faire un effort également à ce niveau contribue à mettre en exécution l'injonction de rester en compagnie des pieux. Et enfin, troisième élément, il insiste sur l'importance de créer des écoles musulmanes. Surtout dans notre environnement, il dit qu'il a appris qu'ici, alhamdulillah, il y a une école musulmane qui existe et il félicite donc les responsables, il les encourage à poursuivre dans cette voie, il encourage même les gens de façon générale à créer des écoles musulmanes, des écoles dans lesquelles on puisse transmettre les valeurs qui sont les nôtres. Et il dit que ne pas faire cela, priver nos enfants de telle opportunité, c'est leur faire injustice. Parce que nous, alhamdulillah, l'islam est parvenu jusqu'à nous par les efforts de nos antécesseurs, de ceux qui sont venus avant nous. Et si nous, aujourd'hui, nous connaissons l'environnement hostile dans lequel nous vivons, aujourd'hui, si nous ne faisons pas cet effort, et les écoles islamiques, les écoles musulmanes sont de bons moyens, de bons vecteurs pour transmettre cette éducation, eh bien, si nous ne faisons pas cet effort, eh bien, ce sera à faire injustice à ces enfants qui sont une responsabilité pour nous. Barakallahu fikum. बहुत मैं आप हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ, आपने बड़े सब्र और तहम्मुल से इतनी देर तक मेरी बातें सुनी। अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए और जो कुछ मैंने कहा है अल्लाह ताला मुझे भी उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। Et donc Mufti Sahab, il vous remercie énormément pour la patience que vous avez témoignée à son égard. Il a pris beaucoup de temps, mais il vous remercie énormément pour votre attention. Et il conclut par le doigt, par l'invocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que les paroles qu'il a pu prononcer lui soient bénéfiques à lui-même et surtout nous soient bénéfiques à tous. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك
ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم لك الحمد زنة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك وعدد خلقك اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم